it's quite open after Challengers lost their last game. So we'll look to come out and fight hard and try and beat a side as good as Challengers. And how's your team 11 looking like? Any changes, and how is it shaping up? With the team shaping up well, there's just one change. Mickey Modi goes out and Naman Chawla comes in. Okay, wish you all the very best. May you have a good game. विक्रम, ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच जो भी टीम जीतेगी उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, पॉइंट्स टेबल में पुख्ता पोजीशन होगी, तो उस लिहाज से ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है. नहीं, डेफिनेटली यू राइटली सेड, दोनों टीम्स 3 मैच खेल के 2 मैच हारी हैं और ऐसे 3 और टीम्स हैं जो यही स्टैंडिंग पे हैं. सो टुडेज मैच इज अ वेरी वेरी क्रूशियल मैच एज फार एज द लीग स्टेज इज कंसर्न्ड एंड आई हैव टोल्ड माय टीम टू टेक दिस एज अ नॉकआउट मैच, बिकॉज a victory here will make it a little comfortable for us for the remaining of the league matches. So we are taking it as a knockout match. And any changes in your squad? Yes, we have 2 changes today. Dipen Patel is not available today. So Manish Nair comes in for him and Neil Khandelwal comes in place of Utsav Parekh. Yes, wishing both the teams the very best. It's going to be a cracker of a game. We get set for the national anthem. We get our caps and hats off. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की वंदे. The news from the center team, Super Kings, having won the toss, has straight away, without any hesitation whatsoever, they have decided to field first. This is going to be one of the best matches in this tournament. We have come to a stage wherein each team in the fray has played 3 league matches each. The team at the top of the table is Chargers, Team Challengers and Team Super Kings at the number 2 and the number 3 spots respectively.
Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Vadakkam, Kem Cho. A cheery good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the GSC 2020. Friends, we are into the day number 13 of this GSC 2020. All the 8 teams in the fray have really played their 3 league matches, and the top 3 teams as far as the points table is concerned, Team Chargers, Challengers at number 2 and Super Kings at number 3. All the top 5 teams have won 2 matches each, and they have lost 1 match each. And today's match, Team Challengers versus Team Super Kings, the 2 teams placed at the number 2 spot and the number 3 spot respectively. Team Super Kings, having won the toss, have elected to bowl first. This is going to be one of the top matches in this tournament so far. 2 top teams against each other. Should be a great contest between bat and ball. The team that really wins this match tonight gets to consolidate their position on the points table, and they will really get into a comfort zone. उस लिहाज से ये मैच बहुत ही ज्यादा मायने रखता है. 2 दिग्गज टीम्स आमने सामने. सबसे पहले तो टीम चैलेंजर्स के कप्तान विक्रम पंजवानी और टीम सुपर किंग्स के कप्तान तुषार उच्चिल, दोनों को ही मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि ये मैच उनके लिए अच्छा हो और एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट टीम में विन. A big thank you to the owners of Team Challengers, Rahul Jha, Vikram Panjwani, Himang Pandit. A big thank you to the owners of Team Super Kings, Jaydev Gupta, Pritpal Singh Baraj, Mickey Modi, Amardeep Singh Baraj. The 3 umpires, Prashant Dubey and Kiran Purandare at the center pitch and in the hot seat. The 3rd umpire for this match, Abhishek Ved Pathak. A big thank you to Pramod Kashyap and his coverage team for wonderful coverage, and his team is really getting with the live pictures as far as the YouTube viewers are concerned. YouTube के हमारे सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं. आज का ये 13वां दिन है और कुल मिला के 28 फरवरी तक ये क्रिकेट महोत्सव अंडर द लाइट्स गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर शुरू रहेगा. आपका यही स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हम पर बना रहे, केवल यही गुजारिश करता हूं. अगले 10 मिनटों के बाद ठीक 7 बजे लाइव एक्शन के साथ फिर से एक बार आपसे कनेक्ट करेंगे. थैंक यू. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त निशाद कोरा. थैंक यू. चलिए, टीम सुपर किंग्स के साथ आपको रूबरू कराता हूं. तुषार उच्चिल कप्तान, जुगराज मेहता, स्मित शाह, प्रितपाल सिंह भराज, चिंतन शाह, विकेट कीपर बल्लेबाज मोहन मित्तल, भावनीत बर्डी, आयुष अग्रवाल, अखिल सुब्रमण्यम, आशय श्रीवास्तव, नमन चावला और 12th मैन के रूप में होंगे हमारे सीनियर प्लेयर 45 प्लस के आइकॉन प्लेयर हेमल दवे. दूसरी तरफ टीम चैलेंजर्स के प्लेइंग 11 के साथ आपको वाकिफ कराता हूं. कप्तान विक्रम पंजवानी, वेदांता गाडिया, श्रीगोपाल जाजू, राहुल झा, जिगर शाह, रोहन शाह, गौरव देवली, मोनीश शाह, नीलकंठ खंडेलवाल, विकेट कीपर बैट्समैन अमोल पोलके, मनीष नायर और 12th मैन की भूमिका अदा करेंगे विनीत शाह. तो ये दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 आपके सामने मैंने पेश किए. इस मैच के टॉस को जीता है विक्रम पंजवानी ने, यानी कि टीम, माफ कीजिएगा, तुषार उच्चिल ने, यानी कि टीम सुपर किंग्स ने, और उन्होंने इस मैच के टॉस को जीतकर गेंदबाजी करने का एक अहम फैसला लिया है. आमंत्रित किया है टीम चैलेंजर्स की सलामी जोड़ी को कि वे पहले बतौर बल्लेबाज इस विकेट का उपयोग करें. बहुत ही तगड़ा मैच होगा. ये दोनों ही टीम्स 2 और 3 पोजीशन पर है. टीम चैलेंजर्स पॉइंट्स टेबल के नंबर 2 स्पॉट पर है और टीम सुपर किंग्स नंबर 3 के स्पॉट पर. यानी कि आज की शाम जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो टीम सीधा नंबर 1 के पोजीशन पर टेबल पर जा पहुंचेगी. उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मैच. अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि सभी 8 ही टीम ने अपने 3 राउंड रॉबिन लीग मैचेस खेल लिए और उसी वजह से ये पॉइंट्स टेबल
पर अगर हम नजर डालेंगे तो एक काफी दिलचस्प दृश्य हमें देखने को मिलता है। इस टूर्नामेंट में अब तक कोई एक ऐसी टीम नहीं है जिन्होंने अपने सभी लीग मैचेस जीते हैं। हर टीम ने कम से कम एक मैच हारा ही है। तो उस लिहाज से अब तक इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम के पास 100% विनिंग रेशियो नहीं है। इस टूर्नामेंट में अब तक 5 टीम्स ने अपने 3 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हारे। कुल मिला के टॉप 5 ये 5 टीम्स है। Chargers number 1, Challengers number 2, Super Kings number 3, Blasters number 4, Warriors number 5, Gangsters number 6, Riders number 7, Gladiators languishing at the bottom of the table, yet to open their account. Very surprising. Gladiators is the only team which has not won even a single match. They are a good team and I'm sure that they will really come back. They will bounce back in this tournament. इस टूर्नामेंट के दरमियान अगर ऑरेंज कैप की हम अगर बात करें तो शाश्वत झुंझुनवाला टीम चार्जर्स के 3 इनिंग्स में 217 रन्स बनाए हैं। एवरेज इस 217 की एवरेज से शाश्वत इस टूर्नामेंट में मार्ग प्रशस्त होता हुआ। स्ट्राइक रेट 136.48, हाईएस्ट 88 नॉट आउट, 3 सिक्सेस, 26 बाउंड्रीज, 350 शाश्वत ऑरेंज कैप होल्डर। नंबर 2 पर है वॉरियर्स का आर्यन पटनी, 3 इनिंग्स 182 रन्स, 91 की एवरेज और 150.41 स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट ऑफ 96। सागर उच्चिल फ्रॉम टीम वॉरियर्स एट द नंबर 3 स्पॉट, 3 innings 157 runs, 52.33 the average, strike rate 174.44। टीम चैलेंजर्स और टीम सुपर किंग्स का कोई भी बल्लेबाज टॉप 3 में नहीं है। देखना है कि आज की शाम वेदांत गाड़िया किस तरह से अपनी रंगत में आकर अपने अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी का प्रदर्शन करता है। दूसरी तरफ पहले 3 या 4 में अब तक तुषार उच्चिल भी नहीं है। तुषार उच्चिल नहीं है, वेदांत गाड़िया नहीं है, रोहन गाजर नहीं है, दक्ष अग्रवाल नहीं है, अनिकेत कवाड़े नहीं है। ये 5 दिग्गज बल्लेबाज अब तक टॉप 3 में नजर नहीं आते हुए। काफी लंबा क्रिकेट खेलना बाकी है, अब भी कुछ भी हो सकता है। और अगर पर्पल कैप की बात करूं तो राहुल जा, टीम चैलेंजर्स के 3 इनिंग्स में उन्होंने 7 विकेट से ली है, 7.43 की इकोनॉमी है। पर्पल कैप इस वक्त राहुल जा के सर पर सच धज के संवरती हुई। प्रतीक बाणे ब्लास्टर्स के नंबर 2 स्पॉट पर, 3 इनिंग्स 6 विकेट्स, 7.11 इकोनॉमी। वेदांत गाड़िया टीम चैलेंजर्स के 3 इनिंग्स 5 विकेट्स, economy of 7.08। Yes, Vedanta has got a chance to get up the purple cap standings, and even Rahul Jha has got a chance tonight. Big thank you to all our sponsors, Pari Group, for having sponsored the Sixers in this GSC 2020. Body First, Shakti Corporation, Sejal Realty, Edelweiss, Jensen LED Lights for having sponsored the DRS setup and the wickets. Gajjar Group, Hex, Dot Shot for having sponsored the boundaries.
Zig Sports Studio for gifting the man of the match vouchers every night. Big thank you to the sponsors for the wonderful support, patronage, and cooperation. Yes, मेरे साथ मैनुअल स्कोरर अब्दुल एंड आकाश सिंह हमारे डिजिटल स्कोरर, दोनों का मैं स्वागत करता हूं. हमारे कवरेज टीम यानी कि प्रमोद भाई कश्यप और उनकी पूरी टीम बिल्कुल तैयार. तो यस, मैंने अब तक एक पूरी नटशेल में एक समरी आपको दी है कि कौन से 3 प्लेयर्स ऑरेंज कैप के दावेदार है, पर्पल कैप स्टैंडिंग्स में कौन से पहले 3 गेंदबाज है. टीम चैलेंजर्स और टीम सुपर किंग्स के बीच आज ये बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है. टीम चैलेंजर्स नंबर 2 के स्पॉट पर है और टीम सुपर किंग्स नंबर 3 के स्पॉट पर है. आज की इस शाम जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो टीम सीधा नंबर 1 के पोजीशन पर चली जाएगी. बहुत ही महत्वपूर्ण मैच ऐसा प्रतीत होता हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मैच हो सकता है अब तक इस टूर्नामेंट के दरमियान, जबकि आज का ये 13वां दिन है. अब तक 12 मैचेस हो चुके हैं. 3 या 4 बहुत ही क्लोज फिनिशेस हमें देखने को मिले हैं. आठों के ही 8 टीम्स ने अब तक 3 राउंड रॉबिन लीग मैचेस खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट के दरमियान. हर टीम को कम से कम 7 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा और फिर सेमीफाइनल्स, ग्रैंड फिनाले, उसके बाद T10 टूर्नामेंट होगा, उसके बाद 45+ टूर्नामेंट होगा. यानी कि 1 नवंबर को जो हमारा ये सीजन शुरू हुआ अंडर द लाइट्स, ये सीजन मार्गस्थ रहेगा 28 फरवरी तक और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई महीनों में भी काफ़ी अच्छे क्रिकेट इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती हुई इस वक्त हमारी आउटडोर स्पोर्ट्स कमेटी करण सिंह वालिया जी के नेतृत्व में और भी ज़्यादा इवेंट्स फरवरी के बाद आपको देखने को इस मैदान पर ज़रूर मिलेंगे. Yes, so we all know that what kind of an explosive player Vedant Gadia can be. लास्ट सीजन में जब ये GSC 2020 हुआ था तो बहुत ही जल्दी एक तगड़ी सेंचुरी के चलते 150+ की इनिंग्स के चलते काफी दिनों तक ऑरेंज कैप के स्टैंडिंग्स में नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखा था वेदांत गाडिया ने. जबरदस्त टैलेंट, जबरदस्त हुनर, डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी best batsman at the Goregaon Sports Club, not just the GSC, but one of the better batting talents in the city of Mumbai. He's already represented the Mumbai under-19 team and is knocking on the higher age group teams as far as Mumbai cricket is concerned. We've got players like Aniket Kawade, the big daddy of Goregaon Sports Club. We've got Rohan Gajjar, who is in prolific form with a century to his blade in this tournament. We've got Daksh Agarwal. He can be absolutely fantastic. We all know that. Aryan Patni is in great form with 182 runs of 3 innings with an innings of 96. We've got Sashwat, who's got 3 half centuries of 3 innings. So what Aryan Patni did the last season, this season it is Sashwat who is trying to emulate him. Aryan Patni not too behind. Sagar Uchil at the number 3 spot with 157 runs, average 52.33, strike rate 174.44. I'm sure at the end of this round robin league format, we'll have players like Tushar Uchil,
in the scheme of things. Aniket Kawade, Rohan Gajjar, Vedant Gadia, Daksh Agarwal, Yash Gadia, all this prolific batters, and not to forget players like Sri Gopal Jaju. All these players will really come into the scheme of things and will try and take their spots amongst the top standings of the orange cap holdings. This is going to be a cracker of a game. This promises to be one of the best matches in the tournament. So please do not go anywhere. This is going to be a cliffhanger of a match. Team challengers, definitely one of the favorite teams in this tournament. The way they got started, they had really struck a purple patch, but unfortunately, in the last league match that they played, they lost a match which they should have won comfortably. So that really threw open the points table, and then lots of hopes have now triggered as far as the other teams are concerned, and it could be anybody's game at this stage. We are not even anywhere near the business end of this tournament, so भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल होगा इस वक्त. कुछ भी हो सकता है. काफी ज्यादा क्रिकेट खेलना बाकी है. इस बीच फिर से एक बार दोनों ही टीम के ओनर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. राहुल झा, विक्रम पंजवानी, हेमांग पंडित. हेमांग पंडित मेरे ख्याल से आउट स्टेशन हो गए क्योंकि काफी दिनों से नजर नहीं आए, गत 3 या 4 दिनों से, वरना हेमांग पंडित तो हर मैच को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं. तो ये 3 ओनर्स है टीम चैलेंजर्स के. टीम सुपर किंग्स के ओनर्स जयदेव गुप्ता, प्रितपाल सिंह बराज, मिकी मोदी, अमरदीप सिंह बराज. ये 4 ओनर्स सुपर किंग्स के, जिसमें से 2 ओनर्स इस मैच में प्रितपाल सिंह बराज खेलते हुए, मिकी मोदी नॉट प्लेइंग दिस मैच. Rahul Jha and Vikram Panjwani, the owners playing the match for team challengers. Both these players, senior players. Yes, as far as team Super Kings is concerned, definitely the key players will have to be Tushar Uchil and Jugraj. Even Mohan Mittal really needs to pull up his socks. He has had a good start in the earlier match, so he needs to continue the good form. Ashay Srivastav needs to come good with the ball. Today, Naman Chawla gets a game. Ayush Agarwal is one of the prolific pace bowlers at the GSC, and this season he needs to come good. He's got the potential. We've got Bhavnit Birdie, one of the best outfielders in the tournament, no doubt about it. An absolute live wire. He really does boost the morale of the team, Bhavnit Birdie. So a fantastic team. Akhil Subramaniam, the youngest talent, gets a chance. So all in all, Team Super Kings look to be a fantastic package. On the other hand, as far as Team Challengers is concerned, definitely the top 3, Vedant, Vikram and Sri Gopal Jaju. Rohan Shah can be a wonderful bat. So those 4 batsmen are really the top 4 for Team Challengers. Rahul Jha, as we all know, can come really good with the bat. He can be a very, very handy batsman, very experienced. Today, Dipen Patel not available. Otherwise, he could really walk into this team any day. Monish Shah, yes, one of the finest new ball bowlers at the Goregaon Sports Club. Amol Polke, we all know that he is such a prolific wicket-keeper batsman. Manish Nair gets a game today. So yes, Team Challengers also look to be such a fantastic outfit. We've got Jigar Shah, a superb batsman, a superb fielder, a very good bowler as well. Yes, so one of the dynamic all-rounders for Team Challengers. Jigar Shah. Boni Mariwala, who was so good with the ball the last season, does not get to make it to the final 11 in this match. Nilkant Khandelwal gets a game, and he would really be wanting to prove a point or two.
So two top teams pitted against each other. अगर आप लोगों ने इस विकेट को देखा होगा तो मेरे ख्याल से गेंदबाजों के लिए बिल्कुल एक ग्रीनिश टॉप है। इतनी ग्रास विकेट पर मैंने कभी जीएससी पर नहीं देखी, उतनी ग्रास आज विकेट पर है। तो गेंद बल्ले पर भी बड़ी तेज रफ्तार से आएगी तो वेदांत गाड़िया जैसे टॉप ऑर्डर सक्षम टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए एक ब्लेसिंग भी हो सकता है। और गेंदबाजों के लिए तो एक जबरदस्त मौका है क्योंकि गेंद टप्पा खाकर स्कीड होगी। और जो इस वक्त विंटर सीजन सेट हो चुकी है तो क्लाइमेट डायनामिक्स कुछ इस तरह के है कि आपको थोड़ी सी लेट मूवमेंट भी प्राप्त होगी, स्विंग को सहायता मिलेगी। और आज बिल्कुल एक ग्रीन टॉप यहां पर हमारे ग्राउंड्समैन ने आज इस मैच के लिए हमें उपलब्ध कराई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विकेट है दोस्तों आज का। ये देखना होगा कि किस तरह से एक्चुअली बिहेव करती है विकेट को, यानी कि 22 यार्ड्स को प्रेडिक्ट करना यानी कि बहुत ही मुश्किल है। कोई भी वर्ल्ड क्रिकेट स्टेज पर भी कोई भी क्रिकेटिंग पंडित हो 100% विकेट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। We just use experience to guess as to how the wicket will behave, but how it actually behaves is a totally different scenario. So we will wait and watch, but yes, an interesting wicket on offer today.
Yes, both the umpires in all readiness. It's going to be Prashant Dubey to take that ball away from Umesh God with the new ball in his hands. Here we go.
Yes, sir. May I request one extra player to be present in the com box from either teams? It's going to be Smith Shah to bowl from the far end, the man on strike, Vedant. Yes, we all are going to be treated to a wonderful game of cricket, no doubt about it. We're going to be having the countdown. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play new. It's playtime. अच्छी गेंद, आत्मविश्वास भरा ड्राइव शॉट, सीधे सीधा वेदांत के बल्ले से। बिल्कुल एक पहाड़ जैसा बल्लेबाज है और अगर वेदांत विकेट पे रुक गए तो बिल्कुल रनों का सैलाब बिल्कुल इस ग्राउंड पर बहेगा आज की शाम। इतना सक्षम खिलाड़ी है। बहुत ही बढ़िया गेंद, कितनी सटीक शुरुआत होती हुई स्मिथ के लिए। बेहतरीन प्रतिभा, हुनर, जोश। गेंद की लंबाई को थोड़ा सा खींचा था, फलस्वरूप वहां पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहा वेदांत ने, बीट हुए, गेंद टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी शुरुआत है यहां पर स्मिथ के लिए। बढ़िया टाइमिंग, गेंद चीरती हुई निकली, डॉट शॉट चौका वेदांत के बल्ले से। मैंने पहले ही कहा था कि गेंद बड़ी तेज रफ्तार से बल्ले पर आएगी और ये शॉट इतना आसान नहीं है। इनिंग्स की शुरुआत में इस तरह का शॉट मिड ऑन और मिड विकेट रीजन के बीच से खेलना, यानी आप सोचिए कि कितना आत्मविश्वास इस वक्त वेदांता के पास है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बैकफुट पर आए, अपनी क्रीज के डेप्थ का सही इस्तेमाल किया, काफी समय मिला कि पीछे की तरफ आए और मोड़ दे डीप स्क्वेयर के रीजन में। बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। रन संख्या बढ़कर अब 6 रनों पर। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत इस वक्त यहां पर इस मैच में, अच्छी तरह से रिदम में नजर आते हुए स्मिथ और वेदांत भी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए। अच्छी दिशा थी, बाउंसर गेंद की थी, थोड़ा सा सरप्राइज करना चाहा, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, केवल दिशा दी और एक डॉट शॉट चौका वेदांत के बल्ले से निकलता हुआ। जिस तरह का ग्रीन टॉप आज यहां पर पेश हुआ है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मौका मिला है यहां पर, और ऐसे हालात में बहुत ही जरूरी है कि यू डू नॉट गेट कैरिड अवे. You just got to make sure that you pitch the ball in the right areas. Looking at this kind of a green top, the bowler could really get carried away and then stray here and there. So you need to be careful on that count. Nicely turning it away off his pads. This man is in dream touch tonight. What a start here for Vedant Gadia. 3 dot shot boundaries off his blade in the very first over. Takes the score to 14 at the end of the first over. Yes, बेताशा चुनौतियों का सामना करना होगा स्मिथ और कप्तान तुषार उच्चिल ने.
मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की विकेट एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है वेदांत गाड़िया जैसे बल्लेबाज के लिए. Yes, it's an ideal setting here for somebody like Vedant to strike gold here, to get into good form. This is just the kind of wicket that he would love to bat on. Yes, this is going to be a test of character here for team Super Kings. If Vedanta gets going, he could really inflict loads and loads of damage on the psyche of team Super Kings. To share the new ball alongside Smith, it's going to be Ashay Srivastava. Yes, he's the brother to Sanjit Srivastava, who is indeed one of the best bowlers at the GSC. Remains to be seen how Ashay now bowls in this very, very important match. The man on strike, the captain Vikram Panjwani. What a icon player Vikram Panjwani is. Such a smart head over his shoulders, great all-round talent, a blockbuster package. Vikram Panjwani, the captain. He would be more than happy to see Vedant in this kind of a form. This is going to be an interesting battle here. What a fantastic cricket match we have on our cards. We have on the cards. बढ़िया गेंद, काफी अच्छी लेंथ, मूवमेंट भी प्राप्त होती हुई, अच्छा शेप मिलता हुआ इस नई गेंद के साथ शरारत करते हुए पहली ही गेंद के साथ आशय ड्राइव करना चाहता विक्रम ने, लेकिन जो लेट मूवमेंट प्राप्त हुई थोड़े से बीट हुए. एक अच्छी शुरुआत आशय के लिए. गेंद की लंबाई को थोड़ा सा खींचा था, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, क्विक रिटर्न, लेकिन कोई खतरा नहीं. वेदांत बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट रनअप बिटवीन द विकेट्स. स्ट्राइक पर अप वेदांत. अब तक वेदांत ने चारों ही दिशाओं में रनों की रंगोली सजाई है. वाइड रेंज ऑफ शॉट्स, 360 डिग्री रेंज ऑफ शॉट्स. अगर आज बिल्कुल अपनी रंगत में आकर बल्लेबाजी करता है तो ये एक बहुत ही जबरदस्त माहौल यहां पर निर्मित करेंगे वेदांत. हल्की सी अपील, पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप शायद, और उसी वजह से अपने आप को रोका आशय ने. इस वक्त वेदांत गाड़िया परेशानी का सबब बने हुए टीम सुपर किंग्स के लिए. बस ये मैच अब शुरू हुआ है, काफी क्रिकेट खेलना बाकी है. इस वक्त जो लेंथ स्ट्राइक की है आशय ने काफी प्रभावशाली है, यानी कि विकेटों को लेने का प्रयास करते हुए, कंटेनिंग लाइन और लेंथ नहीं करते हुए, और इसी तरह की आक्रामक रवैये की अपेक्षा तुषार उच्चिल उनके सलामी गेंदबाजों से चाहेगा. इनिंग्स के शुरुआत में तो आपको बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंदबाजी करनी है, ना कि कंटेनिंग लाइन और लेंथ मैच के शुरुआत से ही. बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है, काफी नपीतुली गेंदबाजी की है, बांधे रखा है अब तक इस पहले ओवर में. नई गेंद के साथ लगातार प्रश्न चिन्ह पूछते हुए आशय श्रीवास्तव. इसी लय में, इसी रिदम में अपने स्पेल को बरकरार रखना होगा, प्रेशर को बनाए रखना होगा. अच्छी शुरुआत आशय के लिए. बढ़िया शॉट, अपनी रेंज में गेंद को पाया, डॉट शॉट बाउंड्री, वन बाउंस इनटू द फेंस. टीम चैलेंजर्स ने इस सीजन में बिल्कुल ये तय किया है कि हम पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, चाहे स्थिति कुछ भी हो. 1 या 2 विकेट्स जल्द अगर खोते हैं तो भी हम पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे.
ये बिल्कुल एक रणनीति इस साल इस सीजन में बनाई हुई है टीम चैलेंजर्स ने। बहुत ही बेहतरीन शॉट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत हुई है। चलिए सीधे सीधा थिंक टैंक आपस में विचार विमर्श करती हुई। चलिए थिंक टैंक में देखिए तुषार उच्चिल, जुगराज और प्रितपाल सिंह भराज। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैच होने की संभावना इस वक्त। तो बेताशा चुनौतियों का सामना करना होगा टीम सुपर किंग्स ने। जिस तरह का आक्रामक रवैया इख्तियार किए हुए टीम चैलेंजर्स के सलामी बल्लेबाज, तो ये दोनों ही बल्लेबाज वेदांत और विक्रम पंजवानी परेशानी का सबब बने हुए। वेदांत तो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है और T20 फॉर्मेट में, जैसे कि 3 दिन पहले अनिल कुंबले ने बताया कि अब इंडियन टीम के लिए भी T20 फॉर्मेट में मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स का होना बहुत ही जरूरी है। प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव, players like Hardik Pandya. Hardik Pandya is all set to take over the captaincy reins of the Indian team as far as the T20 format is concerned. He did a fantastic job with his team in the IPL, lifting that trophy in their debut season. Hardik leading Gujarat Titans. Yes, a change in guard. Jugraj is going to be bowling to we all know that he is an absolute class. Jugraj really likes to take the fight to the enemy camp. Fighter player है और अपने expressions को कभी भी रोकते नहीं है जुगराज. He loves to express himself. Definitely a great talent. Captain's delight, because if he gets going, he can be a match winner. We all know that. We've seen that in the past. He's already picked up a man of the match award in this season, Jugraj. The man on strike, Vikram. Yes, so Vikram is playing with so much of positive intent this season. Looks like he's done a lot of hard work in the off season and he really wants to prove a point or two, especially with the bat in his hands. Vikram Panjwani, the batter, seems to be flourishing this season. That's a great sign here for team challengers. He's leading his side beautifully. Good start. It's a big night here for both the teams. This is indeed a very, very big night. What a brilliant effort there by the most experienced player, Pritpal Singh Bharaj. You cannot ever count him out. He always is in the scheme of things. इस बीच मैं कुलदीप सर का स्वागत करता हूं. जबरदस्त शॉट. केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त करेंगे. पहली बार मैंने कुलदीप सर को मैच जर्सी में देखा है. कुलदीप सर, फॉर द फर्स्ट टाइम यू लुकिंग गुड. Yes, even Mr. Jaydev Gupta is there to cheer his team. Good evening, sir. This is indeed a big night, isn't it? Superbly bowled, superbly bowled. The batsman beaten all ends up, lock, stock and barrel. He is a fighter player. Jugraj. What a talent.
The threaded finger has gone up. Remains to be seen whether they take the referral. The referral has been taken into the com box. Abhishek with Patak. 1 minute. Okay, there is Into a action. review for LBW, waiting to check for a The DRS setup sponsored by Jensen LED Lights. Throwing light on the decision. Over to Abhishek. Thank you, sir. So it's a fair delivery. I've checked. Waiting for the straight on angle and then the ball tracking. Okay, I've checked the height. It's proper. Now checking spin vision. Hitting in line, pitched in line, and looks like it's going on to hit the stumps. So, Kiran, you can stay with your original decision of out. Looks like. Thank you. Vedant once again flattering to deceive and coming back to the pavilion. He was in a murderous mood, but that's such a prized scalp there. And yes, such a fantastic captaincy by Tushar Uchil to get one of his trump cards being introduced into the attack. And he will be a happy man. Jugraj has done the job. Team Super Kings will be more than happy to see the back of Vedant. और वेदांत का ये विकेट वाकई में एक नव चेतना का निर्माण करेगी टीम सुपर किंग्स के फील्डर्स और गेंदबाजों में। एक बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा अब टीम सुपर किंग्स के फील्डर्स में, क्योंकि वो विकेट बहुत ही बड़ा विकेट था। वेदांत गाडिया का विकेट अब उनके स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं रोहन। यस, टीम चैलेंजर्स ने अपना एक रिव्यू खोया है, इस बात को भी मद्देनजर रखें। आशय गेंदबाजी करेंगे विक्रम को अब तक, जबकि चौथा ओवर बस अब शुरू होने वाला है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। बढ़िया टाइमिंग, निहायती खूबसूरत शॉट, डॉट शॉट चौका। गेंद किसी भी लिहाज से
खराब गेंद नहीं थी, उसके बावजूद जिस तरह से टाइम किया अपने शॉट को, जिस तरह से प्लेस किया अपने शॉट को, वाकई में काबिल तारीफ बात। बहुत ही आला शॉट, शानदार शॉट। चार रन्स मिले, डॉट शॉट चौका। अच्छी गेंद, that was almost a nothing shot. Poking at that one, going fishing outside the off stump, that could be dangerous. जब इस तरह की नई गेंद का आप सामना करते हो तो आपको तकनीक पे तवज्जो देना होगा. You got to be at the top of your game. You got to be absolutely tight with your technique. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए आशय, एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेंदबाजी करते हुए आशय आज पहले ही गेंद से बहुत ही रिदम में नजर आए है. ये अच्छा संकेत देती है सुपर किंग्स के लिए. एक बहुत ही पुख्ता ऑप्शन नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए उभर कर आता हुआ आशय श्रीवास्तव के रूप में. डीप मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है जुगराज, एक ही रन मिल पाएगा. चार ओवर के बाद 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर. 7.00 करंट रन रेट. वेदांत का वो बड़ा विकेट सुपर किंग्स के खाते में दर्ज हुआ है. फिर से एक बार स्मिथ शाह को गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया है. जुगराज को वो ओवर दी थी उस साझेदारी को तोड़ने के लिए. जैसे ही अपने काम को मुकम्मल किया, जैसे टीम सुपर किंग्स के लिए काम तमाम किया, जुगराज ने उनको रोका है और फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया है इस नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए स्मिथ
स्मिथ को। अच्छा मूव। बहुत ही बड़ा मैच, यलगार पुकारना होगा इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीम्स के लिए। ऐलाने जंग। आज की शाम ये मैच जो भी टीम जीतेगा वो टीम बिल्कुल पॉइंट्स टेबल के सर्वोत्तम स्थान पर जा पहुंचेगी, वो टीम यानी कि नंबर 1 के स्पॉट पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, कितना अच्छा कैरी प्राप्त होता हुआ, अच्छा शेप मिलता हुआ, गेंद सीम पर लैंड होती हुई थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई काफी अच्छे रिदम में नजर आते हुए स्मिथ। जिस तरह का ग्रीन टॉप आज यहां पर है तो बहुत ही ज्यादा एनकरेजमेंट प्राप्त होती होगी पेस बॉलर को। जीत की ऊंची दीवार को लांघने के लिए कम से कम 180 रनों का मलबा खड़ा करना होगा। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, शॉट ऑफ द इवनिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट। पारी ग्रुप छक्का विक्रम पंजवानी के बल्ले से लगता हुआ। बिल्कुल इस सीजन में पराक्रमी बल्लेबाज के नाते अपनी एक छाप छोड़ते हुए विक्रम पंजवानी काफी काम किया है अपने बैटिंग पर ऑफ सीजन में। मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसे पता है विक्रम को कि मुझे किस तरह से इस सीजन में आगे बढ़ना है, चाह भी है और राह को भी निर्धारित किया है। फलस्वरूप जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए विक्रम पंजवानी अपनी बैटिंग के अलग अलग पहलुओं पर काम करते हुए। विक्रम, इस बीच विवेक भाई नरसरिया का मैं स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग। गेंद की लंबाई को खींचा, लेंथ डिलीवरी, पूरा सम्मान देते हुए बैक टू द बॉलर खेला है। इस सीजन में बिल्कुल ये निर्धारित किया है विक्रम ने कि शुरुआत में पावर प्ले में अगर उसे उनके रेंज में अगर कोई गेंद मिलेगी तो प्रहार करेंगे, खुलकर खेलेंगे। गति में परिवर्तन किया, काफी देरी से खेला, साधारण विकेट कीपिंग एफर्ट वहां पर मित्तल की। नो बॉल का भी इशारा, 1+1। शायद थोड़े से डिस्कंफर्ट में फिजियो, प्लीज आप मित्तल को अटेंड करें। सीम्स टू बी इन सम काइंड ऑफ अ डिस्कंफर्ट। जिस तरह का बेहतरीन छक्का लगाया था, उस शॉट के लिए 21 तोपों की सलामी बनती थी, उतना तगड़ा शॉट था विक्रम का वो पारी ग्रुप छक्का। He seems to be a man on a mission. अपने आप के लिए एक टारगेट रखा है, गोल बनाया है और उसी दिशा में ठोस कदम उठाते हुए विक्रम पंजवानी बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन। अपना एक अलग किस्म का वजूद स्थापित करते हुए विक्रम पंजवानी बतौर बल्लेबाज, हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही अनुभवी प्लेयर है, बहुत ही अच्छे ओनर है, हमेशा अपने कैंप में पॉजिटिविटी रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें इस टूर्नामेंट के आखिरी लम्हों तक यानी कि सेमीफाइनल्स और फाइनल तक पहुंचना है तो विक्रम पंजवानी द बैट्समैन नीड्स टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर विक्रम पंजवानी और बल्लेबाज अगर क्लिक हो जाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ी बात होगी और एक बड़ा अच्छा संकेत होगा टीम चैलेंजर्स के लिए। देखिए, राहुल झा कोई स्ट्राइक गेंदबाज नहीं है, he's not an absolutely specialized bowler, definitely is one of the better all-rounders, लेकिन उनके एक्सपीरियंस के चलते जिस तरह से अपनी सीमितताओं को नजरअंदाज न करते हुए जिस तरह से एक अच्छे ढांचे में अपनी गेम को संवार कर सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल झा इस सीजन में, अब पर्पल कैप उनके मत्थे है।
तो ये दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स विक्रम और राहुल झा, मेरे ख्याल से ये दो अपनी टीम के आधार स्तंभ है। श्री गोपाल जाजू, वेदांत गाडिया, रोहन शाह, जिगर शाह, बहुत ही तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, सो मच ऑफ डेप्थ। Yes, on paper, Team Challengers looks to be one of the very best sides in the tournament, and they have been playing to their potential. They just had a hiccup in the earlier match, but the way they have once again come back, they seem to be so focused tonight. This is a big night here for both the teams. The team that handles the pressure better will have the bigger chance to win this one. Looks like this match could really go right down to the wire. वेदांत was off to an explosive start. जवाबी कार्रवाई के रूप में कप्तान तुषार उच्चिल ने स्मिथ को रोका, अपने हुक्मी इक्के को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जुगराज को, और जुगराज ने काम तमाम किया, वेदांत का वो विकेट हासिल किया। Shot selection is the key, especially when you are in great form. You cannot afford to make a mistake. Make hay while the sun shines. One small loss in concentration, lapse in concentration, and it really cost you the wicket. This is a free hit, nicely timed, a man stationed in the deep. Good piece of footwork in the deep by Tushar, the captain, saving 2 runs for his team. With that couple, the score now on to 38. Yes, this is a picture of calm and belligerence, Vikram Panjwani. जबरदस्त शॉट, एफर्टलेस शॉट रोहन का, निहायत ही खूबसूरत शॉट, शानदार शॉट, जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। डॉट शॉट चौका, ये शॉट रोहन शाह को बहुत ही तगड़ा आत्मविश्वास दे जाएगा, मोरल बूस्टिंग शॉट था वो। डॉट शॉट चौके के साथ 42 रनों पर। रोहन के पास भी ये बड़ा अवसर है कि कम से कम 40 से 50 रनों की एक अच्छी इनिंग्स खेले, फॉर्म में आए। गति में परिवर्तन, लेकिन बहुत ही जल्दी भाप लिया था, सम्मान दिया, कोई भी गलत शॉट नहीं खेले। 5 ओवर के बाद 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मेरे राइट साइड पर मैनुअल स्कोरर अब्दुल और मेरे लेफ्ट साइड पर डिजिटल स्कोरर आकाश सिंह। तीनों अंपायर्स, अभिषेक वेद पाठक हॉट सीट में यानी कि थर्ड अंपायर, और ऑन द सेंटर पिच किरण पुरंदरे एंड प्रशांत दुबे। Yes, the umpires have had a good season. Yes, अब तक मेरे ख्याल में कोई भी कंप्लेंट नहीं है। At the end of the day, लंबा सीजन है, कभी ना कभी तो अंपायर्स गलती करेंगे, इंटरनेशनल अंपायर भी गलती करता है, तो ये तो ये अंपायर्स भी हमारे, दे आर ह्यूमन। यस, जिगर रोहन शाह के पास वो कुवत है, जरूरी है कि आज की शाम वो उड़ान भरे। पाल बेंड होना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इतना अनुभव है कि सही वक्त पर अपने पैरों के साथ गेंद को रोका। 45 प्लस के काफी क्रिकेटर्स ये करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं।
ओवरथ्रो के रूप में और एक रन मुकम्मल हुआ, रन संख्या बढ़कर 45 रनों पर। आज वाकई में रोहन शाह को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हासिल हुई है और काफी आत्मविश्वास भरे शॉट्स खेले हैं रोहन ने अपने इनिंग्स के शुरुआत में ही। ये अच्छा संकेत देता है टीम चैलेंजर्स के लिए। केवल वक्त का तकाजा यही कहता है कि अगले 6-7 ओवर्स तक विकेट पे डटे रहे, लंबी इनिंग्स खेले। आशय भी एक बहुत ही पर्पसफुल स्पेल करते हुए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। Yes, Rohan will have to stay the course. रोहित का हम स्वागत करते हैं। Rohit has been in extraordinary form this season. Three more balls to come in this sixth over. 46 for 1. The man on strike, Rohan. Soft dismissal. There you go. He will be cross with himself. He will be disgusted with himself. Shot selection. Once again, I need to emphasize, there were only two men on the leg side. Unfortunately, straight to the man at short mid-wicket. A good prized wicket there for team Super Kings. That was the wicket of Rohan. Rohan can be such a fabulous player when he gets going. And he seemed to be in good touch, but unfortunately could not stay the course, could not continue for a long time. Back in the hut, that's a crucial wicket here for Ashay. Yes, two of the most experienced players, two of the smartest batsmen in the lineup of team Challengers now will be batting in tandem. Rahul Jha and Vikram Panjwani. Yes, the onus now on Vikram Panjwani to make sure that his team goes past that 160, 165, 170 run mark. The bare minimum that team Challengers would be wanting to put on the board at this stage would be something in the region of at least 170, 175 plus. Up against a superb side like Super Kings. Super Kings are the defending champions. And nobody can take Team Super Kings lightly. Nobody will dare to do that. They know that if they do so, they might have to pay a huge penalty. A fantastic side. Two top teams against each other. The man on strike, the new man in, Rahul. Yes, Mohan will have to tighten up his wicket keeping. He's a talented wicketkeeper batsman. He's a specialized wicketkeeper batsman. So those regulation collections down the leg side really need to be done with quite nicely. Slightly sloppy tonight, Mittal. He'll have to pull up his socks. Nicely struck. But fortunately for Vikram, it wasn't so nicely struck as to reach the hands of Ayush. For a moment, everybody in the camp of team Challengers must have had their hearts in their mouths.
But no harm done. A single easily taken, 48 now. Rahul, the man on strike. 49 it is. 50 runs up on the board for team challenges in quick time. But yes, the encouraging thing for team Super Kings is that players like Vedant Gadia and Rohan are back in the hut. Yes, I'm sure that the main job now playing on the minds of Rahul Jha and Vikram Panjwani is that they stay put at the wicket for at least the drinks interval, lay the foundation for batters like Sri Gopal Jaju to come and play the natural game. तो बस यही कोशिश में होगे, यही फिराक में होगे कि कम से कम ड्रिंक्स इंटरवल तक खेले बिना कोई विकेट खोए, कम से कम 12 से 13 ओवर तक ये जोड़ी विकेट पे बनी रहे, ये कोशिश में होंगे। श्री गोपाल जाजू जैसे अटैकिंग बल्लेबाज के लिए एक अच्छी स्थिति पैदा करे, एक अनुकूल स्थिति पैदा करे, इसी फिराक में अब ये दोनों ही बल्लेबाज रहेंगे, राहुल झा और विक्रम पंजवानी। चलिए अब जुगराज को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया है तुषार ने अब तक अपने आप को रोके रखा है। शायद ड्रिंक्स इंटरवल के बाद हमें तुषार को हम देखे बतौर गेंदबाज, या तो फिर ड्रिंक्स के पहले के ओवर में शायद वो 9वां ओवर शायद तुषार करेगा, पता नहीं। जिगर शाह भी बल्लेबाजी करने बाकी, ये दो जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर्स है, जाजू और जिगर। अच्छा कवर ड्राइव, अच्छी फील्डिंग आयुष की। इक्यावन रन 2 विकेट के नुकसान पर विक्रम सामना करते हुए जुगराज का। Yes, I'm sure that both these batsmen will be slightly watchful against Jugraj. बढ़िया शॉट, अच्छी टाइमिंग, गेंद गोली की रफ्तार से निकली, अच्छा प्लेसमेंट, डॉट शॉट चौका। विक्रम पंजवानी ने उस गेंद को आउटसाइड द ऑफ स्टंप से खींचकर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में अपने शॉट को खेला। बेहतरीन टाइमिंग, डॉट शॉट चौके के साथ 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विक्रम पंजवानी ने अब तक अपने 21 गेंदों में 3 चौके और एक बेहतरीन छक्के की सहायता से 23 रन बनाए। एक लंबी इनिंग्स खेलनी होगी, शायद आज तो 80-90 रनों की, शायद तो शतक की तरफ भी आज बढ़ना चाहेंगे विक्रम पंजवानी। मैच सिर्फ आपके हुनर से नहीं जीता जा सकता, ना केवल आपके किस्मत से, लेकिन जो फैसले आप क्रिकेट मैदान पर लेते हो उन फैसलों के चलते मैच जीता या हारा जा सकता है। जो जुगराज को इंट्रोड्यूस किया तुषार ने, विकेट पाया वेदांत का, वो एक लाजवाब मूव था। चलिए रेफरल लिया है, जेंसन एलईडी लाइट्स, थ्रोइंग लाइट ऑन द डिसीजन, इंडिकेट करते हुए कि वो ऑफ द बैट। ओवर टू माय डियर फ्रेंड अभिषेक वेद पाठक, सॉरी। Checking for the fair delivery. It's a fair delivery. Waiting for front on and then spin vision.
Okay, I have checked the side. The side is okay. Uh, Not out. So the ball is pitching in line. It is hitting on the off stump, but the ball seems to be turning a lot, so it might miss the leg stump. So you can stay with your original decision of not out, Kiran. Stay with your original decision of not out. Yes, Vikram Panjwani lives to fight another day. There were tense moments in the camp of team challengers. The umpire was going through the whole routine, and whenever in any kind of a doubt, the benefit of doubt will always go to the batsman. Inconclusive. Jugraj to Vikram. सात ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आशय का स्पेल बरकरार। आशय ने अब तक अपने 3 ओवर्स में 20 रन्स दिए हैं आशय ने अब तक, और विकेट भी हासिल हुआ है अच्छा स्पेल करते हुए। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज ही पॉजिटिव नजर आई है। वो मेंटली प्रिपेयर होना, जब आप बड़ा मैच खेलते हो, बहुत ही जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से आप फील्ड पर आपके प्लान्स एग्जीक्यूट करते हो, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है ये सभी बातें। देखना है कि कौन सी टीम अब जीत की नाव पर सवार होती है आज की शाम। बहुत ही बड़ा मैच, जीत का परचम किसके मत्थे लहराता है ये देखते हैं। Yes, we all will be treated to fantastic cricket here. This is the big night. Of the inner edge, or maybe even the lower edge, not too clear. Nevertheless, a single added. With that single, the score now on to 56. खराब गेंद सही अंजाम तक पहुंचाया, बहुत ही तगड़ा शॉट। गोली की रफ्तार से वो शॉट निकला। 6 रन्स मिले, पारी ग्रुप छक्का। गुड कमबैक डिलीवरी बाय आशय। विक्रम पूरी तरह से सेट हो चुके और इस जीएससी के मैदान के चारों दिशाओं में रनों की रंगोली सजाते हुए विक्रम पंजवानी बेहतरीन फॉर्म में। 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्वीपर पॉइंट पर भावनित, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, वहां पर खड़े। 63 with that single now. 63 for 2. We are into the 8th over. Ashay bowling the final over of his spell. It's been a mixed bag for Ashay tonight.
off the outer edge. The ball flies away to the third man region. Just a single added. Yes, he's bowled well in patches. Most of the times he has bowled pretty well tonight, but on a couple of occasions he's bowled the loose deliveries and has paid the penalty as well. So it's been a mixed bag as far as Asha is concerned tonight. Nicely played, getting right behind the ball, playing it right underneath the nose. Yes, Mickey Modi watching the game with a keen eye. Score at the end of 8 overs is 65 for 2. इस बीच सुपर किंग्स के ओनर अमरदीप सिंह महाराज का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. गुड इवनिंग अमरदीप भाई. Yes, as was expected, the 9th or the 10th over. ड्रिंक्स के पहले तो एक ओवर तुषार को करनी ही थी, क्योंकि वो प्रिफर्ड एंड है तुषार का, तो फार एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक पर विक्रम. विक्रम ने 28 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन्स बटोरे हैं और बखूबी साथ निभाते हुए राहुल झा. अब तक उन्होंने केवल 4 गेंदों का सामना किया है. यही कोशिश में लगे हुए हैं विक्रम और राहुल के एक बड़ी साझेदारी प्रस्तापित करें और अपनी इनिंग्स को सही मायनों में मार्ग प्रशस्त करें. छोटी सी गेंद कट कर दिया, वहां पर डॉट शॉट चौका. काफी समय मिला विक्रम को कि बैकफुट पर जाए, क्रीज के डेप्थ का उपयोग करे. ज्यादातर अपनी गेंदों के साथ काफी टाइट गेंदबाजी करते हैं, नपीतुली गेंदबाजी करते हैं. 69 for 2. उस डॉट शॉट बाउंड्री के साथ 69 for 2. विक्रम ऑन टू 35. much better. Yes, definitely one of the key links as far as the bowling lineup of Super Kings is concerned. The captain, Tushar Uchil. Very well bowled. After that, a slightly ordinary first delivery wherein he was belted away for a boundary. He's been spot on. अविनाश भाई का हम स्वागत करते हैं. अविनाश मयंकर. पारस भाई का भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं. फ्लाइटेड गेंद, फ्लाइट में चकमा दिया यहां पर तुषार उच्चिल ने. अच्छी गेंदबाजी, चुनौती दी थी विक्रम को कि बड़ा शॉट खेले. फ्लाइट में बीट करना चाहता और बीट किया भी. अच्छी गेंद. रन संख्या थमी हुई 70 रनों पर.
थोड़ी सी गेंद रुक कर आई। एक दिलचस्प शुरुआत तुषार उच्चिल के लिए। 71 और एक गेंद आनी बाकी है। स्ट्राइक पर राहुल। चैलेंजर्स नंबर 2 के स्पॉट पर और सुपर किंग्स नंबर 3 के स्पॉट पर। आज का ये मैच जो भी टीम जीतेगी वो नंबर 1 के स्थान पर जा पहुंचेगी। दिस इज द सुपर नाइट। End of the 9th over, 71 for 2. Yes, it will be drinks after this over. चलिए अब कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से मैन विद द गोल्डन आर्म, बहुत ही ज्यादा अनुभवी 45 प्लस का आइकॉन प्लेयर प्रितपाल सिंह बराज। Okay, he's only 39. Yes, so one of the very experienced senior players. Yes, he had a wonderful game in the previous match and would really want to continue in the same vein. One bounce straight to Jugraj. A chip shot coming from the blade of Vikram takes him to 37. The score on to 72. It's going to be drinks after this over. Yes, I leave it to Vinay Surana to decide who's going to do the mid-innings analysis. Vinay Surana, you got to decide. The ball keeping slightly low. Very military in his line and length, Pritpal. His experience will really be very handy to Super Kings. '73. Nicely putting bat to ball, just giving it the direction into the gap. A man stationed in the deep. Bhavnit, just a single added.
The final ball to come. Very well bowled. A reasonably good over bowled by Prithpal as was expected of him. The score at the end of 10 overs is 74 for 2. The two men in the hut, Rohan Shah and Vedant Gadia. At the wicket, Vikram Panjwani, the captain, playing on 38 and giving him a good company, Rahul Jha. Vinay. Welcome back. Tushar starting from where he had left in the early over. अच्छी लाइन को स्ट्राइक किया है. अच्छा मुकाबला इस वक्त तुषार और विक्रम के बीच. बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी सी गेंद नीचे भी रही.
Wide gained. थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ. Vikram will have to be careful here. He's done all the hard work. He's gone through the grind. He's looking good. He needs to stay put at the wicket. This is good bowling by Tushar. This time, no chance whatsoever. The ball flying away off the outer edge. Dot shot boundary to the blade of Vikram takes the score for the team on to 79. Was such a good over, but unfortunately that boundary of the edge will spoil the figures for Tushar. Vikram on to 42. Score at the end of 11 overs, 79 for 2. Prithpal to continue. That single being a bye, 80 for 2. Prithpal with his through with his shot a little early. Vikram very well bowled. That was the change in pace. With that single, the score now on to 81. Hugely experienced Prithpal. Straight away the dreaded finger goes up and not even wanting to take the referral. That's the Jensen LED lights wicket throwing light on the decision. Rahul Jha on the way back to the hut. Monish, who's batsman? Gaurav Devli, the new man in to replace Rahul. 81 for 3 at this stage. We enter the 12th over. Team Super Kings, having won the toss, decided to bowl first. The match evenly poised. Even Stevens at this stage. A man in good touch, holding fort, holding one end up, Vikram Panjwani. Yes, so they've got a prolific batting lineup. The new youngish up and coming talent, Gaurav Devli on strike for the first time in this match. They've got players like Jigar and
Sri Gopal Jaju yet to come. So yes, they have got that quality depth in their batting lineup. Yes, Prithpal once again delivering the goods for his team here. Always keeps bowling in the right areas. He strikes the right line and length at most times. Very military with his line. One more ball to come in this over from Prithpal. Both the teams playing their fourth league match. 3 more league matches to be played after this one. बारह ओवर के बाद 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक सफल ओवर वहां पर समाप्त हुआ। राहुल शाह की वो महत्वपूर्ण विकेट दर्ज कराई प्रितपाल सिंह बराज ने। ड्रिंक्स के पश्चात अब गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस करते हुए आयुष अग्रवाल को। The tall and lanky pacer to bowl from the far end. Yes, Ayush bowling from the in-orbit end. Starts off with a well-directed bouncer. Yeah, this is a green top. Absolutely greenish. That's a good surprise delivery first up. Interesting start here. Well-directed bouncer. That already is one for the over. Wonderful piece of fielding by the man at point region. Good pick up and throw. He had a shy at the striker's end, but no harm done. Nevertheless, a good piece of fielding. With that single, the score now on to 83. The man on strike now, Vikram. ये सब बहुत ही ज्यादा दारोमदार अब विक्रम के सक्षम कंधों पर हाथ थमा हुआ है। अगर विक्रम की टीम को 160 से 165 रनों की उस पार पहुंचना है तो विक्रम को अब आखिरी लम्हों तक विकेट पे बने रहना होगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिगर जैसा बल्लेबाज, श्री गोपाल जाजू जैसा बल्लेबाज अब तक बैटिंग करना बाकी है। ये दो प्रोलिफिक स्ट्रोक प्लेयर्स श्री गोपाल जाजू और जिगर। प्रमोट किया गया है यहां पर गौरव को।
लॉन्च किया था अपने आप को, पोजीशन में भी आए थे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी खेल लिया अपने शॉट को, फलस्वरूप अंदरूनी किनारा लेकर पैड्स में आई गेंद। एक रन के साथ 83 पर रन संख्या जा पहुंची है। 3 विकेट्स अब तक खोए हैं टीम चैलेंजर्स ने। वेदांत गाड़िया, राहुल झा और रोहन, राहुल और वेदांत, ये 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक होल को टारगेट किया था, गेंद की लंबाई में तब्दीली पेश की थी, अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए आयुष, युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज। बहुत अच्छी शुरुआत आयुष के लिए, काफी अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए। मैंने पहले बताया कि बिल्कुल एक ग्रीन टॉप एक एनकरेजमेंट होगी पेस बॉलर्स के लिए। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो बहुत जबरदस्त परचेस मिलेगा आपको इस विकेट से। दिशा दी वहां पर, अखिल ने दौड़ लगाई, दूसरे रन लेने से नहीं रोक पाए, बड़ी आसानी से दूसरा रन मुकम्मल किया। ओवर की समाप्ति 13 ओवर के बाद 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 86 for 3। A big thank you to all our sponsors, Parik Group, Body First, Shakti Corporation, Sejal Realty, Edelweiss, Jensen LED Lights, Gajjar Group, Hex, Dot Shot and Zig Sports Studio. Yes, we already through with 13 overs. The run rate at this stage is 6.62. 3 top order batsmen back in the earth. This is such a good bowling effort here by Team Super Kings. Having won the toss, decided to bowl first, and at this stage they are nicely placed. Could be anybody's game, but yes, at this stage they are very nicely placed. Team Super Kings. 86 for 3. Trying to essay a big shot there. Smart running bit in the wickets by Gaurav Devli, especially. He took the onus on himself to go to the danger end. Young legs, fresh legs. Smart running bit in the wickets and nicely responded to by Vikram. $89 for 3. Off that outer edge, straight into the hands of the man posted at Dipish Gully. Nicely taken. One more batsman bites the dust. Important wicket for Prithpal. Prithpal bowling such a great spell for his team. On his way back to the hut, the young talent Gaurav Devli. That catch was taken by Chintan. That ball was really flying away. Nicely taken, well judged.
The new man in, the very accomplished and the aggressive attacking batsman Jigar. He always likes to play with freedom, a naturally attacking player. Chargers at the number 1 spot on the points table. Challengers number 2, Super Kings number 3, Blasters number 4, Warriors number 5. The first 5 teams on the points table have won 2 games each and lost 1 game each. It's all about the net run rate, which is really deciding the number 1 to number 5 spots. Only the difference is the net run rate. All the 5 teams have 4 points each. The team that wins the match tonight will get to the number 1 position on the points table and will be comfortably placed. Well bowled, cutting the batsman into 2. The ball coming in to the body of Jigar, just opening the face of the bat at the very last moment. A slightly dangerous shot to play first up, but nicely executed in the end. Yes, we all know that he can be an absolute match winner. Jigar with the number 333 jersey. Walks into that shot, a couple of steps outside the crease, straight to the man in the deep. Smith posted in the deep. Just a single added. A fantastic battle here between bat and ball. Team Super Kings versus Team Challengers. गति में परिवर्तन, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके, फलस्वरूप एक एक्स्ट्रा रन वाइड के रूप में। सोच तो अच्छी थी लेकिन ठीक तरह से निभा नहीं पाए। इतनी ज्यादा अनुभवी गेंदबाज है प्रितपाल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। 2 महत्वपूर्ण विकेट्स उनके खाते में है। जिगर ने गेंद को बल्ले तक आने दिया और दूसरा रन लेने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में नाकार दिया। बिल्कुल सही निर्णय, वरना आउट होना होता। आशय का बहुत ही बेहतरीन पिकअप एंड थ्रो। 93 for 4 और एक गेंद आनी बाकी है प्रितपाल के इस ओवर में। रन रेट इस वक्त 6.72। जब तक ये करंट रन रेट 7.5 के ऊपर नहीं जाता, तब तक चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है टीम सुपर किंग्स के लिए। 8+ के घर में जरूर जाना चाहेंगे विक्रम अपने करंट रन रेट के साथ, ताकि 160, 165, 170+ स्कोरबोर्ड पर नजर आए। इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी और उसी वजह से काफी शॉट गिरी। हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई विक्रम पंजवानी की। हाफ सेंचुरी टू विक्रम, व्हाट एन इनिंग्स, a superb innings, 50 runs with the help of 5 dot shot boundaries and 2 blazing Pari group sixes. He needs to continue. Now Vikram and Jigar really hold the key, to be followed by Sri Gopal Jaju. These 3 batsmen will have to play out the 20 overs. .36 balls to go, and they would be wanting to put up at least something in the region of 65, 70+. It has been a good bowling effort by Team Super Kings. All the bowlers have really bowled quite tidily. They have been decent. Nobody's gone for huge runs. Everybody has played out their roles to a nicety. Pritpal Singh Barrage with those 2 wickets, and
Jugraj with that outstanding wicket of Vedant, really the standout bowlers. Tushar to bowl from the far end. The man on strike, the new man in, Jigar. Yes, so Vinay Surana, the man in charge of conducting this match. What a shot, and handsome over the mid-wicket fence. Up she goes, away she goes. That ball has traveled a long distance. Just what the doctor wanted. 100 runs up on the board for team challengers. And what a fabulous innings. Pari group sixer. Desperately asking पंजवानी टू स्टे द कोर्स. पूरा खेल ये कॉल देते हुए कैंप में से सही कॉल. मैंने पहले ही कहा था कि जब विक्रम 20-22 रन पर पहुंच चुके थे कि शायद आज वो 70 से 80 रनों की इनिंग्स कम से कम टारगेट करेंगे. वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं. जुगराज ने दौड़ लगाई है लेकिन दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. एक 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर. वहां पर भावनित खड़े हैं तो गेंद भावनित के बगल से गुजरना यानी मुश्किल बात है. थोड़ा सा जल्दी खेल लिया, विकेट के सामने खेला. अगर थोड़ा सा लेट स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते तो शायद गैप मिल पाता. 1 रन का इजाफा. 105 रन. अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दर्शाई. जिगर ने पहले कमिट हो चुके थे फ्रंट फुट पर और जैसे ही एज लगी अच्छा, बहुत ही अच्छा कैच लिया मोहन ने और पेविलियन में वापस. अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे वो विक्रमादित्य तीर, जिससे दुश्मन को धाराशायी किया जा सकता है. विस्फोटक बल्लेबाज बाहुबली प्लेयर श्री गोपाल जाजू.
एक बहुत ही अच्छा विकेट दर्ज होता हुआ तुषार उचिल के लिए। जिगर, हम सभी जानते हैं कि अगर विकेट पे 3 ओवर्स भी अगर रुक जाते तो बिल्कुल एक क्षमता रखते 28 से 30 रन क्विक फायर इनिंग्स खेलने की काबिलियत जिगर के पास है। बहुत ही अनुभवी और सक्षम बल्लेबाज जिगर, दुर्भाग्यवश पेविलियन में वापस और उनके स्थान पे अब हरफन मोहल्ला खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया गेंद, दैट वाज रियली फायर्ड इन, दैट केम इन विद द आर्म। Score at the end of 15 overs is 105 for the loss of 5 wickets. What a cricket match. Yes, indeed, all credit to Team Super Kings for having kept things tight here. Things under control. Things are under control at this stage. The final 5 balls, the final 30 legal deliveries to come in this innings of Team Challengers. Team Super Kings, having won the toss, elected to bowl first and reasonably placed at this stage. 16th over just about getting started. 105 for 5. It's going to be their trump card. Jugraj to bowl from the infinity end. Jugraj to bowl the 3rd over of his spell. Till this time, he has given away just 6 runs of his 2 overs and that prized scalp of Vedant. He loves to raise the tempers, doesn't he? Very expressive. What a good-looking shot there. 2 men in hot pursuit. A good piece of fielding there, but the ball ricocheting off the hands of Smith into the fence. Dot shot boundary off the blade of Vikram. Vikram taking the fight to the enemy camp. What a counter-attacking innings this has been from the blade of Vikram Panjwani. So focused. Nicely timed into the gap. What a shot. Consecutive dot shot boundary. That was a slightly loose one. Gets the treatment that it deserved. Yes, putting his foot on the pedal here. Shifting gears in prolific touch, in good touch. This time, uppercutting it. That will be a hat-trick of boundaries. Hat-trick of dot shot boundaries. 117 for 5. Just the kind of over that Vikram and Team Challengers were looking forward to. Is this the big over that could really tilt the scales in favor of a Team Challengers? Expensive in this over. What a counter-attacking innings. He's coming good here. What a player. तगड़ा शॉट खेला है, गैप में खेला है, चौथा चौका। अब विक्रम पंजवानी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए वजीर आजम टीम चैलेंजर्स के विक्रम पंजवानी, क्या शान और शौकत है इस सीजन में विक्रम पंजवानी की। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप क्या कर सकते हो, ये दर्शाया है विक्रम ने। इस सीजन में बिल्कुल अलग किस्म के बल्लेबाज नजर आए। साधारण टाइमिंग, एक बाउंस प्रितपाल सिंह के हाथों में गेंद, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से मुकम्मल किया।
थोड़ा सा टॉसअप किया था वहां पर अपनी उस गेंद को। 17 रन अब तक दे चुके हैं। इस ओवर में 17 रन से दिए हैं 18 रन। रुक कर खेला अपने शॉट को, शानदार शॉट, एक्सक्विजिट टाइमिंग और एक डॉट शॉट चौका। 22 रन्स मिले उस ओवर में। बढ़िया बैटिंग, 22 के 22 रन्स विक्रम के खाते में दर्ज हुए। खुलकर खेलते हुए 56 गेंदों में 81 रनों पर जा पहुंचे हैं। क्या मेरी भविष्यवाणी वो शतक शायद कुलदीप सर सही साबित हो सकती है शायद, लेकिन क्या बढ़िया इनिंग्स खेली है सर, बहुत ही बढ़िया इनिंग्स। इस सीजन में अलग किस्म के बल्लेबाज नजर आए हैं विक्रम, फोकस्ड है। 16 ओवर के बाद 127 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 24 गेंद आनी बाकी। थैंक यू जॉन्टी सिंह। देखिए विक्रम ने अपने आप के लिए इस सीजन में बतौर बल्लेबाज एक गोल सेट किया है। बतौर कप्तान तो किया ही है, लेकिन अपने आप के लिए, अपने खुद के समाधान के लिए, अपने करियर के लिए उन्होंने एक गोल रखा कि बतौर बल्लेबाज इस सीजन में मैं एक अलग छाप छोड़ूंगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। वी ऑल नीड टू पिक अ लीफ आउट ऑफ द बुक ऑफ विक्रम पंजवानी। This is what application can do to your game. If you apply yourself to a nicety, results will definitely come. Commitment, dedication, application. That self-belief. अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से अगर चाहोगे तो पूरी कायनात जुड़ जाएगी कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में, पूरी कायनात जुड़ जाएगी। तो बस यही हुआ है विक्रम के साथ। अपने आप के लिए एक बेहतरीन चाह और राह दोनों निर्मित की है विक्रम ने, फलस्वरूप बढ़िया बल्लेबाज के रूप में नजर आते हुए। श्री गोपाल जाजू 128 रन गेंदबाजी करते हुए। आयुष इन ऑर्बिट एंड की तरफ से वापसी करती हुई यहां पर टीम चैलेंजर्स। आज वाकई में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विक्रम पंजवानी ने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस मैदान के चारों दिशाओं में रनों की रंगोली सजाई है। वाइड रेंज ऑफ शॉट्स को एग्जिबिट किया है, पूरी तरह से अपने बल्लेबाजी के हुनर को दर्शाया है। रनों अच्छी गेंद, थोड़ा सा जल्दी खेल लिया जाजू ने अपने शॉट को, बड़ी तेज रफ्तार से अपने रिप केज भी वो गेंद आई। विक्रम पंजवानी के बल्ले से रनों का सैलाब बहता हुआ रोक पाना बहुत ही मुश्किल। चट्टान जैसा प्लेयर, रनों की नदियां बहती हुई। 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर विक्रम। बढ़िया शॉट, नजाकत से खेला। पूरी तरह से विक्रम के जहन में वो किस तरह से फील्ड सेट की गई है उसका पूरा पिक्चर उनके मेमोरी में सेव हुआ है। चारों दिशाओं में अपने शॉट्स को खेला है। 86 पर जा पहुंचे हैं। क्या वो शतक आज बनाएंगे विक्रम? लास्ट 7 गेंदों में 6 बाउंड्री और एक डबल स्कोर किया है विक्रम ने। ही इज ऑन अ रोल हियर। अपर कट,
चलिए देखेंगे, और ये डॉट शॉट चौका, अपर कट, स्टेप आउट होकर खेले थे। देखिए अपने सेंचुरी के बारे में जरा भी न सोचते हुए टीम के लिए किस तरह से ज्यादा रन्स बटोरू, केवल ये एकमात्र हेतु के साथ अपनी इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करते हुए सही मायनों में विक्रम पंजवानी। The last 8 balls he scored 7 boundaries and 1 couple. Superb batsmanship. Everybody is being entertained here. On 90. Into the stands, away she goes. Party Group 6, a loose delivery and dismissed from sight with disdain. On to 96, Vikram Panjwani, on to 96. Score at the end of 17 overs, 144. This is the most brightest chance that Vikram Panjwani has had to score that elusive century. Can he do it? He's almost on the brink of a century, just one dot shot boundary away from that triple figure mark. What an innings this has been, an outstanding effort, a superlative effort. Leading from the front, the captain, Vikram Panjwani. He seems to be on an absolutely different level this season. He seems to be the man on a mission here. It's going to be Prithpal Singh Barraj. The final 18 balls to come. This team is on a roll here, 144. Can they post something in the region of 180 plus? If both these batsmen stay put at the wicket for at least, say, the 15 deliveries out of those 18, that 180 will definitely be on the cards. The last 10 balls, he scored 40 runs. Vikram. Superb shot. That will have to be the shot of the tournament. Into the stands, deposited into the stands. What a blazing shot, belter of a shot. With that, Parikh Group 6, 150 runs up on the board. Wow, what a shot there. That will have to be amongst the top 3 shots of the season till this stage. We are into day number 13. Has taken the height but not the distance. Very difficult chance. We'll have to wait and watch. पहले ही मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चांस था. 2 रन बड़ी आसानी से मुकम्मल हुए. बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनमेंट इस वक्त प्रोवाइड होता हुआ. This is prime time drama. This is prime time drama. GSC kit, GSC 2020. ब्लॉक होल में अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद. इस वक्त जीएससी 2020 के व्यूअरशिप के जो टीआरपी रेटिंग्स है उनका नशा सर चढ़कर बोलता हुआ. एट देयर वेरी हाईएस्ट द टीआरपी रेटिंग्स ऑफ जीएससी 2020 ऑन यूट्यूब. दिस इज प्राइम टाइम ड्रामा. चले 4 रन मिले 22 के रूप में शायद. अच्छी गेंद, वेलकम रन्स, स्वागतार्ह रन्स, चाहे किसी भी तरह से आए स्वागत है इन रनों का. 157 रन 5 विकेट के नुकसान पर. करंट रन रेट 8.89. 9 के घर में या 9 के ऊपर जाएगी तो बिल्कुल कंफर्ट जोन में चली जाएगी टीम चैलेंजर्स. 62 रनों की पार्टनरशिप और उन 62 रनों में से कितने रन्स विक्रम ने बनाए? 50 के ऊपर. साधारण टाइमिंग, अच्छी गेंद प्रितपाल की. गेंद के नीचे आने को नहीं दिया, काफी ऊपर की तरफ गेंद को डाला था. रन संख्या
158 रन, जबकि इस 18वें ओवर की एक गेंद आनी बाकी। आखिरी गेंद स्ट्राइक पर है जाजू। पीछे की तरफ गेंद जा रही थी, डिफिकल्ट चांस था, गेंद के नीचे आने में तो कामयाब हुए थे। ओवर की समाप्ति, रन संख्या 160 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के साथ 18 ओवर के बाद आखिरी 12 गेंदानी बाकी। विक्रम पंजवानी 97 पर खेलते हुए केवल 61 गेंदों का सामना किया है। विक्रम ने 4 पारी ग्रुप छक्के और 12 डॉट शॉट बाउंड्रीज की सहायता से विक्रम पंजवानी 97 रनों पर खेलते हुए 97। क्या वो सेंचुरी दर्ज होगी? Everybody waiting in anticipation of that deserving century for Vikram. We all are hoping and praying for that century to come off the blade of Vikram. He's been that good tonight. This is the big night, and the captain Vikram Panjwani has really come good in a big way. In style, the captain Vikram Panjwani leading from the front. अपनी टीम की नैया पार लगाते हुए, अपनी टीम को विजय रथ पर सवार कराते हुए विक्रम पंजवानी इस वक्त पूरी तरह से कब्जा जमाए हुए है यहाँ पर टीम चैलेंजर्स। गत 11 से 12 मिनटों में इस मैच ने एक अजीब करवट ली है। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि सुपर किंग्स ने शिकंजा कसा है, लेकिन जिस तरह से एक काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली है विक्रम ने, अब ऐसा प्रतीत होता हुआ कि इस वक्त ड्राइवर सीट में बाकायदा टीम चैलेंजर्स है। बारह गेंदों में भी अच्छी कप्तानी करनी होगी, अपने सही फील्डर्स को सही जगह पर तैनात करना होगा। बहुत ही ज्यादा अनुभवी गेंदबाज स्वयं कप्तान अपने आप को बॉलिंग अटैक में इंट्रोड्यूस करते हुए स्ट्राइक पर है विक्रम पंजवानी 97 पर। व्हाट एन इनिंग्स! एक अलग किस्म का वजूद स्थापित करने में कामयाब हुए इस सीजन में विक्रम बतौर बल्लेबाज, बिल्कुल टॉप लीग बल्लेबाजों में जाते हुए। That throw should have been at the end of Vikram. वो थ्रो विक्रम के एंड पे होना चाहिए था, बिकॉज इस टायर्ड बैकफुट पे भी खेला था। 161. Vikram on to 98. Sri Gopal Jaju. Whenever Sri Gopal Jaju comes on to bat, there is a certain buzz in the air. एक अलग किस्म की महक होती है जब जाजू बल्लेबाजी करते हैं। जबरदस्त टाइमिंग, मिड विकेट रीजन की तरफ बेहतरीन छक्का जाजू के बल्ले से, पारी ग्रुप छक्का 167। रोकना नामुमकिन हो चुका है। दे आर ऑन अ रैम्पेज। पूरी तरह से इस वक्त गेंदबाजी को नेस्त नाबूद किया है। हर गेंद पर प्रहार करते हुए, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, शानदार बल्लेबाजी, आतिशबाजी इस वक्त नजर आती हुई जाजू और विक्रम के बल्ले से, बिल्कुल आतिशबाजी। विक्रम पंजवानी बिल्कुल उस सेंचुरी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए, बिल्कुल सेंचुरी के कगार पर, बिल्कुल दहलीज पर विक्रम पंजवानी 98 पर। लाल जाजू सामना करते हुए तुषार का। Faster one with the arm eye.
और एक रन 22 के रूप में थोड़े से आज साधारण रहे मोहन अपने विकेट कीपिंग को लेकर. वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड विकेट कीपर्स, a very good talent, good reliable wicket keeper batsman Mohan Mittal. Stays on to 98. 7 balls to come. Maybe that nervous 90 is starting to play on his mind. Maybe this is the best chance that he will ever have. Clean ball him. लेकिन वाकई में विक्रम पंजवानी की उस इनिंग्स को 21 तोपों की सलामी देनी होगी. देखिए कितना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से तुषार और उनकी टीम ने सराहना किया विक्रम पंजवानी का. लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड that Vikram could not get to that century. A century is a century. He did all the good work. Fantastic innings, superlative innings. This is not fair. This is not fair that he did not get a century tonight. Not fair on him. Tushar is somebody who will always make life miserable. He is not somebody who will give away easy runs. Champion bowler, a champion player, one of the best captains that we have in this tournament, Tushar Uchil. The score at the end of 19 overs, 168, says my young scorer, Abdul. Yes, thank you to John T, Abdul and Akash for throwing statistics at me in such quick time. What a fantastic cricket match. Just the way I have enjoyed every bit of it, I'm sure that every spectator present on the field and everybody watching the match on YouTube must have really enjoyed this game so far. And the second half, ladies and gentlemen, boys and girls, promises to be even a better one. So do not go away. Stay put. Tighten your seat belts. New man in Nilkant and is going to be facing Smith. The final 6 balls. Yes, warm welcome to Vipul Gala Shrivals, my dear friend. What a shot! Belter of a shot! Goodness me! Just look at the way he got into a position. Just look at the way he really read the length of that delivery in such quick time. A superb shot. Dot shot boundary to the blade of Jaju. That was a 6. Parik Group 6. 174. One bounce to Tushar. He's not going to give that second run away, and maybe we'll have to wait and watch. This is not Mohan Mittal's day tonight. On any other day, maybe he would have been able to effect a direct hit. With that couple, the score now on to 176. Jaju already on to 27 of just 11 balls. With the help of 3 towering Parik Group 6ers. He's the only man at the Goregaon Sports Club whose 6ers will always be more than the boundaries. केवल एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है.
आप देख लीजिएगा, अगर ये टीम आगे तक जाती है सेमीफाइनल फाइनल तक, तो श्रीगोपाल जाजू के उस अगर पूरे सफर को अगर हम एनालाइज करें तो उनके छक्के चौके से शायद ज्यादा होंगे, और एकमात्र ये प्लेयर ऐसा होगा शायद, पता नहीं। गैप में खेला है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर आशय श्रीवास्तवा। 2 रन्स नहीं मिले, केवल 1 ही रन से समाधान प्राप्त हुआ। 177, आखिरी 2 गेंदानी बाकी। स्ट्राइक पर इस वक्त नीलकंठ खंडेलवाल। He's been given a game tonight. His team is so nicely poised. 177. Catch हो सकता है. He's not going to drop those. Unfortunately, picking up the wrong man straight to Tushar. The final ball to come in this innings of Team Challengers. The scoreline at this stage is 177 for 6. And the final ball to be faced by Shrigopal Jaju. It's going to be the new man because of the new rules. There cannot be a crossover whenever a catch is taken. So Monish will be facing that final ball. 177 for 7. The final ball to come. Do not go anywhere away. Fasten your seat belts. This is going to be a great flight in the second half. चलिए आखिरी गेंद, सामना करेंगे नए बल्लेबाज मोनिश। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। चलिए दूसरा रन भी ले चुके हैं और वहां पर दूसरा रन लेते हुए रन आउट हुए। 178, यानी कि इस मैच को जीतने के लिए 179 रन्स का टारगेट है टीम सुपर किंग्स के पास। चुनौती भरा लक्ष्य लेकिन नामुमकिन नहीं। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए विक्रम पंजवानी ने जीएससी के मैदान के चारों तरफ रनों की रंगोली को सजाया। विक्रम पंजवानी की उस इनिंग्स के लिए 21 तोपों की सलामी। Well played, well done, but we all are disgusted that he did not get his century. Not fair on him, but we got to take it in a stride. Thank you. 179 runs to win the match. Team Super Kings, a champion team, the defending champions. We are going to be having an absolutely enthralling second half, so do not go anywhere away. Thank you. This is your host and host, Nishad Kora. Yes, for the mid-innings session, I'm going to be joined by Captain Abhay, and remains to be seen whether somebody can partner. It's only going to be Captain Abhay.
Hello. Hello, hello. Good evening and welcome to the mid-innings session. I have with me the cricketing pundit and one of the players at the GSC 2020. It is Captain Abhay. Captain Abhay, warm welcome. Thank you, Nishad bhai. It's good to be here, back amongst the games after a 2-day gap, and good to see a great game of cricket going on today. Yes, today's match, Team Super Kings having won the toss, they elected to bowl first and almost through the first 14 to 16 overs, 15 overs, the match was quite evenly balanced. But towards the end, the kind of flourish that Vikram Panjwani provided and that impetus from Jaju really took the game slightly away from Team Super Kings, and they are nicely poised at this stage, Team Challengers. Yes, absolutely. I think Super Kings won a good toss and they chose to field. As we've seen the past couple of days, dew is going to be a good and a big factor here, and I think soon the dew will start coming onto the field. So it was a good toss to win, and they selected to field first. But challengers got off to a good start. Vedant got them off to a good start in the first over, 3 boundaries coming. That dents the confidence of the bowler. But once they had Vedant, and they had a plan for Vedant today. They had Jugraj especially there, and I wouldn't have been surprised if Jugraj would have come in on the first over and tried to get Vedant out. But they planned for him, planned for a particular batsman. It worked for them. They managed to get back a little bit of the advantage in the mid innings. But once Vikram got going, and with Jaju there to back him up, both of them, I think, just took the game away from the Super Kings bowler. I think at one point we were thinking 150 would have been a big total, but looking at the score now, 178, almost close to 180, I think it's going to be a tough ask. Yes, the kind of form that Vikram is in this season really tells a lot about his character. He's set a goal for himself that he as a batsman wants to flourish this season. He has dreamt of success and is just about doing it to perfection. What a great performance this season by Vikram Panjwani. Absolutely. You were just saying that having the talent is one thing. It's the application that matters in the end. And that's what he's shown today. Last season was a very tough season for team challengers altogether. And from the T10 tournament, they've just decided to take it a notch up. And that's how they've been performing since then. And it's good to see them back in form. And today, innings of 98 of 63 balls, I think that's with 4 sixes and 12 fours. Was a fantastic innings. It was just chanceless, most probably. Yeah, there's no way under the sun that we can take that defending champions team Super Kings lightly. So the chances of the second half even being more enthralling are very, very high. And even at this stage, team Super Kings could play some fantastic cricket and go ahead and win the match. Yeah, absolutely. It's not that they have a dearth of batting in their hands, and they've got a good team. They've been champions from last year, so they know how to win. They know how to win matches. They know how to win tournaments. So it's not a bad deal for them. 180 is not a terribly high score. It's been 190 has been chased on this ground, so
I think it's a pretty gettable total. Depends on how their batsmen go and depends on how the challengers bowl now. At this stage, I really do feel that as far as the second half is concerned, Tushar Uchil really needs to come good tonight, and he really will be the key player, one of the key players, definitely. Yeah, I think his team needs a big score from him today, and he's the kind of player who can get stuck in and get those scores. So it's not wrong of the team to expect that from him, and I think if he does that today, we'll have a Super Kings victory, I'm sure. Yes, there are five teams who have won 3 matches each, and they have lost 2 matches each, and the team that wins the match tonight gets to the #1 position on the points table. So remains to be seen whether it is team Challengers or team Super Kings. But just a word or two about the young talent at the GSC. Sashwat is on a roll as far as the orange cap is concerned. He scored 217 runs of 3 innings, average of 217. He's got 350s in 3 matches and is looking to be in ominous touch. What Aryan Patni did the last season, it is Sashwat who is emulating him this season. Yes, absolutely. I mean, it's a proud moment for us as club members to see our young generation go up and flourish. And we have one of our members today representing the Mumbai under-19 team. And that's a big thing for this club. It tells us how the management has been working and how the infrastructure has been developing here at the club. And it's really nice to see. It's a big and a proud moment for all of us, I think. So hopefully more talent comes up in the future, and we probably have most members from this club going and playing on for Mumbai, and then higher onwards and upwards, as they say. And yes, Aryan Patni, we all know, is somebody who will always defy odds, who will always defy logic, who will always be ahead of that law of average. Once again this season, he's at the #2 position, and still a long way to go. Aryan Patni is also in great touch. Yeah, he is, and we've seen him score a 90. Unfortunately, he got run out the other day. I think he had 70 odd in the first game. Didn't click in the second game, so that's where his average has come down, I think. And I think Shashwat has been out just once in all of his 3 innings. So that's where the averages are playing right now. But these guys are just going hammer and tongs when it comes to batting, and that's really good to see. That competition, that fire should be there, and that's how the cricket will go up in this club. Yeah, if we talk about the prolific batsmen at the GSC, players like Vedant Gadia, Rohan Gajjar, Aniket Kawade, Daksh Agarwal, Yash Gadia, all these players have not scored a 50 yet. It's a long way to go, and these batsmen are champion batsmen. So we are headed for a fantastic tournament. Yes, absolutely. It's just, if you remember, this is just 3 games down. There are still 4 games to go in the league phase, and then you have your qualifiers, eliminators, and the finals. So there are still a lot of games to go, and players like Aniket or Rohan, once they get going, they're the ones who can get big scores. So it will probably be just 1 innings for them to come up to that 1, 2, or 3 number. You never know. These are big game players, and they play big when the time comes. So looking forward to a really exciting tournament this time around. Yeah, this season the cricketing standard has been right up there, better than the last year, because there's stiff competition and quite a few young faces are making their debut and playing alongside the senior cricketers. I think these boys will really get converted into men, and they could really be put into the big league. Players like Subramaniam, then Devli, we've got Divyam Shah, so many youngsters coming up the ranks. It's so good to see that when this the youth mixes with the experience, you know, the young guys can learn from the experienced guys as to how to carry ahead in their games. There's a lot of things that they can learn from the experienced guys. On the other hand, the experienced guys can learn something, a thing or two from the young guys, because that's raw talent that they're watching. I'm sure they can learn from these guys as well. So it's so nice to see such a nice mix of youth and experience that we get in our tournament here every year. Yes, and the extraordinary auction that was designed has really balanced all the 8 teams, and difficult to predict your favorite at this stage. Yes, it's been tough. We don't have one team that's run away with the tournament as yet, and we don't have one team that's languishing at the bottom. That's how close it has been, and it's just 3 games down. But I feel that this will be a very close tournament, and that's good to see, because the auction was designed in such a way that all teams are balanced, and nobody has a chance to complain. I think everybody is happy with their squads, and that's how we get a good tournament. Yes, one last and final question for Captain Abhay.
Whom will you put your money on tonight? Team Challengers or Team Super Kings? If the dew comes as is expected, my money would be on the Super Kings. However, I feel the Challengers are a good bowling unit, and in case the dew doesn't come, I think then it will be their game to win today. Yes, so that's it from the mid-innings break. Thank you so much. We connect with you once again live in the next 7 to 8 minutes. A big thank you to all the viewers connected with the GSC 2020 on YouTube. We are into day number 13. This is going to be a long season, so stay put with us. Looking forward to the same kind of support and patronage right through the season. Thank you. God bless you. This is your host and host, Nishad, signing off. Thank you, Captain Abhay. Thank you so much, Nishad bhai. इस बीच हम हमारे आउटडोर स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन करण सिंह भाई वालिया का मैं स्वागत करता हूं. The three umpires, Abhishek Ved Pathak in the hot seat as the third umpire, Prashant Dubey and Kiran Purandare, the two main umpires, a manual scorer, Abdul, the digital scorer, Akash Singh, and yes, Jonty coordinating everything to perfection here. And Pramod Bhai Kashyap and his coverage team on a roll here, doing a fab job. A big thank you to the staff members of Goregaon Sports Club. They are doing a fantastic job behind the scenes, shoulder to shoulder with Mr. Karan Singh Walia. हमारे सभी ग्राउंड्समैन के लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन. आज की विकेट जो आपने दी है, बहुत ही बेहतरीन विकेट है. जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला है उस खूबसूरत विकेट के वजह से. तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. And a big thank you to the governing council of Goregaon Sports Club for the wonderful support that they provided to the outdoor sports committee. Thank you, and joining you live in the next 5 minutes.
पारस भाई हमारे सीनियर क्रिकेटर के हाथों में वो नई गेंद बिल्कुल तैयार एंड किरण पुरंदरे बिल्कुल तैयार उस नई गेंद को ले जाएंगे और इस सेकेंड हाफ को शुरू करेंगे. थैंक यू. The man on strike, Akhil Subramaniam, and at the non-strikers end it is Chintan Shah. And it's going to be, as always, Monish to bowl with the new ball from the in-orbit end. It's playtime. Off to a confident start here. Just what the doctor ordered. A man in pursuit. The ball has enough legs on it to go past the boundary line. What a start here. Dot shot boundary off the blade of the left-handed batsman Akhil Subramaniam. Nicely getting on the top of it, nicely leaning into that shot. Wasn't a bad delivery, but simply a good cricketing shot. Superbly bowled, superbly bowled. बहुत ही शातिर दिमाग के धनी है मोनिश और इस नई गेंद के साथ हमेशा ज्यादातर काफी सटीक गेंदबाजी करते हैं. उनका यूएसपी है अच्छी गेंदबाजी करना, नपीतुली गेंदबाजी करना. ये उनका एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है. शायद चलिए अप क्लोज विकेट कीपिंग करेंगे. विकेट कीपिंग की जिम्मेवारी जिगर को सौंपी है आज. अमोल पोल के, माफ कीजिएगा. Yes, one of the very best wicket-keeper batsman at the GSC, a senior cricketer, Amol Polke, standing up close with the helmet on. Akhil facing Monish. That's been referred into the hot seat. The DRS setup sponsored by Jensen LED lights, throwing light on the decision. Over to Abhishek. Hello. Yeah, there's an appeal for stumping.
waiting to check for a fair delivery. Okay, it's a fair delivery. Checking for the side on angle. Jensen LED lights throwing light on the decision. Okay, I've checked both the angles and I'm satisfied that the foot is on the line. It's on the popping crease. So the batsman is out. The batsman is out. That's the wicket they were looking forward to. Not an easy job being at the third umpire. With the available technology, he's got to apply his logic, he's got to apply his sanity. And in the end, really must say that that was a good call. That first wicket is down for the Super Kings. That wicket keeper was
asked to keep wickets close in, and to the very first delivery, Amol Polke effects a stumping. In walks the rock star, Tushar Uchil, the man of the moment. If anybody can take the team to glory tonight, it is got to be Tushar Uchil, no doubt about it. तुषार वाकई में अपनी टीम के लिए वो वजीर आजम है, वो विक्रमादित्य तीर है सुपर किंग्स की तरकीश में, जिससे दुश्मन को धाराशायी किया जा सकता है. चैंपियन प्लेयर, चैंपियन टीम का चैंपियन प्लेयर तुषार उच्चिल. Team Super Kings have drawn the daggers out here. On the other hand, yes, team challengers have drawn first blood here with that wicket of Akhil Subramaniam. The final ball to come in this first over from Monish. It's been a successful over. नजाकत से खेला, बढ़िया शॉट, निहायती खूबसूरत शॉट, केवल दिशा दी, डॉट शॉट चौका. चिंतन शाह के लिए एक अच्छी शुरुआत, आत्मविश्वास भरी शुरुआत. चलिए अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी वेदांत गाड़िया के सक्षम कंधों पर. मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, सुपर टैलेंटेड वेदांत गाड़िया. ये एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा वेदांत और तुषार के बीच. दो दिग्गज प्लेयर्स आमने सामने, दो बड़े नाम, ऐलाने जंग. वेदांत गाड़िया बनाम तुषार उच्चिल. अपनी पहली गेंद थोड़ी सी फुलर डाली थी वेदांत ने, आगे की तरफ गेंद को लैंड कराया, पूरा सम्मान देते हुए मिड ऑफ के रीजन में खेला. बढ़िया गेंद और ये चकमा खा गए. बहुत बड़ा विकेट यहां पर दर्ज हुआ.
वेदांत गाड़िया के नाम उस कैच को लिया है विक्रम पंजवानी ने। जिस विकेट की खोज में थी यहां पर टीम चैलेंजर्स, उस विकेट को बाकायदा हासिल किया है पेविलियन में वापस जाते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बाहरी किनारा लेकर सीधा फर्स्ट स्लिप में खड़े फील्डर विक्रम पंजवानी के हाथों में जाल बिछाया था और उस जाल में फंसे वहां पर तुषार उच्चिल। फलस्वरूप पेविलियन में वापस दूसरा बड़ा धक्का टीम सुपर किंग्स को। काफी हद तक पलड़ा भारी है अब टीम चैलेंजर्स का, हालांकि काफी क्रिकेट खेलना बाकी है और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं टीम की एक बड़ी आशा की किरण, बड़ी उम्मीद जुगराज मेहता। बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है जुगराज के मजबूत कंधों पर। बहुत बड़ा प्लेयर पेविलियन में वापस जा चुका है। अब यहां से एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, बेताशा चुनौतियों का सामना करना होगा टीम सुपर किंग्स ने। चैंपियन टीम है, वापसी का रास्ता तलाशना होगा। अब भी इस मैच में कुछ भी हो सकता है। योगेश शर्मा जी का स्वागत। चलिए, ये एक बहुत बड़ा संकेत दे जाते। देखिए वेदांत गाड़िया को, देखिए वेदांत को, देखिए ये मौका नहीं जाने देंगे। हैट्रिक पर है वेदांत गाड़िया। थोड़ा सा आक्रामक रंग पेश करने की कोशिश की, अब पिछली खेला, फलस्वरूप पेविलियन में वापस ये जेंसन एलईडी लाइट्स विकेट प्राप्त हुआ। On his way back to the hut. What a fabulous start here for team challengers. पूरी तरह से शिकंजा कसा है, पलड़ा भारी ड्राइवर सीट में। Looking down the barrel of the gun, team Super Kings in dire straits on his way back to the hut. Jugraj without having troubled the scorers. What a start here. This is an absolute dream start here. Team challengers, as I've been mentioning right through this GAC 2020, that indeed the team challengers are looking to be the team to defeat, team to beat. And Vedant Gadia is more than ecstatic. He's so happy because that was the wicket of Jugraj. He is on a hat-trick. The bowler in Vedant Gadia coming into the forefront. He was off to a good start with the bat, a quick fire innings, but could not carry on to consolidate the innings. Got out quite early by his standards, but with the ball, he's delivered two huge blows. नए बल्लेबाज नमन चावला अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। एक बड़ा अवसर है नमन के पास। परिस्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल है, चुनौती भरी परिस्थिति है, लेकिन इस स्थिति में अगर निखर कर आएंगे तो फिर इस आगे के सीजन के लिए अच्छे फॉर्म में होंगे। एक परीक्षा है, इस परीक्षा में खरा उतरना होगा नमन को। बिल्कुल एक अटैकिंग फील्ड सजाई है। बहुत ही सटीक गेंद, बिल्कुल सटीक हैट्रिक बॉल, पूरा सम्मान देते हुए
काफी अच्छी तकनीक के साथ नमन ने उस हैट्रिक बॉल को नेगोशिएट किया, कोई नुकसान नहीं। करीबन हर गेंद के साथ प्रश्न पूछते हुए वेदांत गाड़िया बिल्कुल अपनी रंगत में आकर, उजागर होकर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। He's bowling with his tail up because he's got two prized scalps in the form of Tushar Uchil and Jugraj Mehta, two match winners into the hut of consecutive deliveries. Down the leg side should be a wide one, quite the right call, one extra one up, 12 for 3. This is a huge ask for Chintan and Naman to take their team as close as possible to the winning target. They've got this opportunity. They have to treat this challenge as an opportunity. Team Super Kings need to prove that this team is not all about Tushar Uchil and Jugraj. This is a team of 11 good cricketers, and everybody can really chip in and give a good contribution towards the welfare of the team. This is a huge ask, definitely, but they'll have to flourish in this kind of a tight situation for them to once again earn the tag of being a champion team. तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर अच्छा सकारात्मक क्रिकेट खेलते हुए इस मैच में बने रहना होगा। गेंदबाजी का भार संभाले हुए इन ऑर्बिट एंड की तरफ से मोनिश। इस बीच विधायक असलम भाई का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग सर। अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप की चैनल को स्ट्राइक किया है अपने इस ओपनिंग स्पेल में। मोनिश ने अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए काफी फेमस है, उनका यूएसपी है वो सटीक लाइन और लेंथ। नई गेंद के साथ थोड़ी सी शरारत भी कराते हैं, लेट मूवमेंट प्राप्त करते हैं, बहुत ही ज्यादा अनुभवी गेंदबाज है। बढ़िया टाइमिंग, निहायत ही खूबसूरत शॉट। वो गेंद स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर से निकली, स्टैंड्स में चली गई। पारी ग्रुप छक्का चिंतन के बल्ले से, बेहतरीन टाइमिंग। फिर से एक बार असलम सर का मैं स्वागत करता हूं। पूरी तरह से जीएससी 2020 में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर उनका खुद का मैच नहीं हो तब भी फॉलो करते हर गेम को। असलम भाई, बढ़िया गेंद, बारी किनारा लिया। That was a pitch of delivery, just leaving the batsman a wee bit good enough to take the outer edge into the gloves of the wicketkeeper Amol Palke. One more man bites the dust here. Wickets falling at regular intervals. इस वक्त पूरी तरह से सुपर किंग्स की पारी लड़खड़ा चुकी है। Wickets falling like 9 pins at regular intervals. 4 top order batsmen cooling the heels in the pavilion. In walks the wicketkeeper batsman Mohan Mittal.
This is an extraordinary turnaround. The defending champions, Team Super Kings, on the mat. Looking down the barrel of the gun in dire straits. इस वक्त परिस्थिति बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल, बहुत ही ज्यादा विपरीत इस वक्त. डिफेंडिंग चैंपियन सुपर किंग्स ऑन द मैट, पूरी तरह से इस मैच में हावी, काफी हद तक पलड़ा भारी है. शिकंजा कसती हुई, पूरी तरह से मैच पर कब्जा जमाती हुई टीम चैलेंजर्स. पूरी तरह से सुपर किंग्स के बैटिंग लाइनअप के सपनों को चूर चूर किया है. मोनिश के लिए ये दूसरा विकेट. एक अच्छा योगदान करते हुए मोनिश. स्ट्राइक पर अब मित्तल. अपील की है, देखना है कि रेफरल लेते हैं या नहीं. द क्लॉक इज टिकिंग. यहां पर तो हमारे थर्ड अंपायर के लिए वो क्लॉक टिक कर चुकी है. रेफरल लिया है, चलिए रेफरल लिया है. Okay, there's an appeal for LBW, checking for the fair delivery. जेंसन It's a एलईडी fair लाइट्स. delivery, waiting for front on and then spin vision. डिसीजन पेंडिंग. यलगार पुकारा है टीम चैलेंजर्स ने. पहली बार डीआरएस को इंट्रोड्यूस किया गया है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ने, और इस सेटअप को स्पॉन्सर किया है जेंसन एलईडी लाइट्स, थ्रोइंग लाइट ऑन द डिसीजन. We are being treated to a super game, spellbounding performance by Team Challengers. Team Challengers on a roll here, dominating the match, no ends. इस वक्त टीम चैलेंजर्स के मोनिश टीम सुपर किंग्स के लिए परेशानी का सबब बना हुआ. मोनिश. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विजय रथ पर इस वक्त सवार हो चुकी है टीम चैलेंजर्स. क्या लक्ष्य के उस पार ये विजय रथ जाता है, वो देखना होगा. आज उनके लिए केवल एक ही मूल मंत्र है, कर हर मैदान फतेह. टीम चैलेंजर्स बिल्कुल टीम ऑन अ मिशन. एक हिकअप मिला था इसके पहले के मैच में, उसके अलावा बहुत ही तगड़ा क्रिकेट खेला है टीम चैलेंजर्स ने. ऑन पेपर भी अगर हम टीम को देखें तो सबसे ज्यादा डेप्थ टीम चैलेंजर्स में नजर आती हुई. ऑन पेपर भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. ओवर टू अभिषेक. Thank you, sir. So the impact is in line in between middle and leg, and the ball is hitting
on the leg stump and it will swing and miss the leg stump. It seems like there is no evidence that you need to overturn your decision. Please stay with your original decision of not out. Please stay with your original decision. Yes, kudos to our third umpire for doing a swell job. He's been really good in that hot seat. Yes, but indeed well bowled by Monish. Is bowling a fuller length, is making the new ball talk. He's getting some good shape with that new ball. He's bowling in the right areas. That length is a probing length. Getting the batsman on the front foot, inviting the batsmen to play their drive shots. This is a fabulous bowling effort by the old war horse, Monish. Slightly tentative, Mohan, slightly circumspect. He'll have to be very, very decisive with his shot selection. You cannot be caught in two minds in this kind of a situation. You got to be decisive. Play on the front foot or the back foot. Whatever you do, you got to do with conviction. The score at the end of 3 overs is 18 for the loss of 4 wickets. Off to a dream start here. Vedant has taken 2 wickets in his first over. And Monish has picked up 2 wickets in his first 2 overs. And looks like it's going to be Vikram now to bowl from the infinity end. A change in bowling guard. Vedant has been asked to halt. His 3 overs have been held back. And it's going to be the captain, Vikram, to bring himself on into the bowling attack. The man in the first slip in the catching position, Vedant. The man on strike, Naman. That's a dot shot boundary. Not such a good effort by Monish. Must be slightly tired after those 2 overs. Not giving his 100% effort. Dot shot boundary. Not so much conviction, more of enthusiasm. Yes, one of the prolific all-rounders for Team Challengers. Fantastic batting and so useful with the ball as well. Also leading his team to an ICT. थोड़ी सी लूज गेंद थी, पूरी तरह से आक्रमण नहीं कर पाए, केवल एक ही रन मिला। रन संख्या 23 रनों पर 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पेविलियन का रुख कर चुके हैं। विक्रम पंजवानी शायद इस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को विक्रम की गेंद छोड़कर निकलेगी।
So yes, this should be a good opportunity. He would really like to bowl to the left-handed batsman with the ball going away from him with his off-spin deliveries. That was bowled faster through the air. That was a flat trajectory delivery. End of a decent fourth over. The scoreline reads 23 for 4. Once again, a big thank you to all our sponsors. Pari Group for having sponsored the Sixers. Body First, Shakti Corporation, Sejal Realty, Edelweiss, Jensen LED Lights for sponsoring the DRS setup and the wickets. Gajjar Group, Hex, Dot Shot for sponsoring the boundaries. Zik Sports Studio for gifting the man of the match vouchers. Big thank you to all the sponsors. To continue with the spell from the far end, that is the in-orbit end. It is going to be, once again, Monish has already picked up 2 wickets and the man on strike is going to be Naman. Yes, Naman need not look at the scorecard at this stage. He just really needs to stay at the wicket for as long as possible. He needs to play the waiting game. He need not look at the score at this point in time. The ball keeping slightly low, trying to get into a position to play that pitch pull shot, but no connection. Very well bowled, and even the wicketkeeper Amol Polke is doing a superb job. He too is on a song right from the word go, wherein he's really come up close to the wickets. He's been in good form. Yes, till the 14th over, as Akash Singh points out that the run rate of team challengers was just something in the region of 6.2, 6.4. And courtesy that late onslaught from Vikram Panjwani and Jaju, the scoreline reached 178. So yes, the run rate is not too much of a concern at this stage. All that they need to do at this stage is to make sure that they do not lose any further wickets. Just play out the next 3-4 overs, maybe play till the drinks time and then revisit the strategy. They just need to make sure that they do not lose any further wicket till the drinks and interval. बस इसी तरह से अच्छी गेंदों को हल्के हाथों से खेलकर, गैप में खेलकर स्ट्राइक रोटेट करनी है. मोहन के पास भी एक अच्छी इनिंग्स खेलने का यहां पर मौका है. इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद अब सामना करेंगे.
नमन, युवा प्रतिभाशाली प्लेयर इस सीजन नमन डेब्यू करते हुए मिस कर गए और एक विकेट मोनिश के खाते में दर्ज। आधी टीम पेविलियन में वापस आ चुकी है, पारी बिल्कुल लड़खड़ा चुकी है। Wickets have kept falling at regular intervals, and yes, definitely in the driver's seat, well and truly on their way towards a big win here tonight. It is Smith Shah, the new man in. Such a good left arm seamer. He needs to do his bit with the bat with the number 44 jersey, Smith Shah. Bhavnit is padded up, and Prithpal Singh Baraj is also gearing to face the balls. Prithpal Singh Baraj must not have expected that his turn will come so early in the innings. So he started to unpack his bag, Prithpal. पूरी तरह से शिकंजा कसा है यहाँ पर, पलड़ा भारी। फिर से एक बार गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया गया है वेदांत को। उस सफल पहले ओवर के बाद विक्रम ने वेदांत को रोका, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर से एक बार एक साधारण पहले ओवर के बाद वापस गेंद थमाई है वेदांत को। स्ट्राइक पर है मोहन और उनके सामने नए बल्लेबाज स्मिथ शाह। बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ वेदांत ने स्पेल के शुरुआत से ही स्ट्राइक की है, काफी सटीक गेंदबाजी करते हुए। अब एक गली के पोजीशन में और एक फील्डर को कैचिंग पोजीशन में ले आए विक्रम। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, मिस कर गए, प्रेशर बढ़ता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अमोल पुलके। There's an appeal for stumping, checking for the fair delivery. रेफर किया है। It is a fair delivery, waiting for the side on angle. Jensen LED lights throwing light on the decision. Okay, the foot is planted behind the popping crease. When the bails are dislodged, the batsman is not out. I repeat, the batsman is not out.
31 for 5. अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया स्मिथ ने। बिल्कुल अटैकिंग फील्ड सजाई है। वेदांत और मोनिश का जादू चल गया। बेहतरीन शॉट, निहायत ही खूबसूरत शॉट, डॉट शॉट चौका। गेंद चीरती हुई निकली, बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट भी बहुत ही बढ़िया। आत्मविश्वास भरा शॉट। ओवर के बाद 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आधी टीम पेविलियन का रुख कर चुकी है। पूरी तरह से बैटिंग लाइनअप को तहस नहस किया है, नेस्त नाबूद किया है। गेंदबाजी में उतरे हैं पर्पल कैप होल्डर राहुल झा। राहुल झा ने अब तक 7 विकेट से लिए और वेदांत भी अब 7 विकेट्स पर जा पहुंचा है। इस मैच के पहले 7 विकेट्स लेकर पर्पल कैप राहुल के पास थी और अब वेदांत ने भी 7 विकेट्स लिए। राहुल के पास मौका है कि अपने उस टैली को आगे ले जाए। अजीब और गरीब गेंद, वहां पर शायद गेंद हाथों से स्लिप हुई। Mountain to climb here for Team Super Kings. Mountain to climb. नेट रन रेट पर भी थोड़ा सा गौर फरमाना होगा। 140 150 तो कम से कम करे, क्योंकि नेट रन रेट डिसाइसिव हो सकती है। कल तक 5 ऐसी टीम्स इस टूर्नामेंट में है जिन्होंने 2 मैचेस जीते और एक मैच हारा है। ऐसी 5 टीम्स है। अच्छी एफर्ट मोनिश की, डीप मिड विकेट पे तैनात, केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त किया। 39 रन।
जबरदस्त कैच. क्या वो जिगर है? यस, जबरदस्त आउटफील्डर है जिगर. Another man bites the dust. One more wicket going down the drain. Wickets falling like 9 pins. The man back in the hut. Superb catch by Jigar. Superb catch. This team is on a roll. They are playing like a well-oiled machinery. Each and every player has been assigned a role and बखूबी अपने भूमिका को अदा करता हुआ हर player. They are playing like a cohesive unit. In walks Ashay Srivastava with the number 10 jersey. Next is padded up Bhaunit and then Pritpal Singh Bharaj. Kuldeep sir is not happy with the performance. I'm sure that Kuldeep sir will give his advice, give his analysis, and just let the players know what went wrong and how they should approach the next match. Vedanta Gadia has bowled his 2 overs for 8 runs and has picked up 2 wickets. I'm sure he would be wanting to take that one more wicket. He needs 2 more wickets now to go past Rahul Jha. Rahul Jha is now picked up 8 wickets. Vedanta has picked up 7 wickets. So that purple cap still with Rahul Jha. But Vedanta is fast catching up. Ujjwal Goyal is here. He needs to get going like the last season. Good timing. Monish in pursuit, but the ball has enough gas on it to go past the boundary line. Nicely timed into the gap. Mohan Mittal with that dot shot boundary. The score for the team now on to 43. Slightly fuller in length. Vedant will not be happy with that full toss delivery. Hello. Very well bowled. Will be happy with just a single. With that single, the score now on to 44. We are into the 8th over. Vedant bowling to Ashay.
Nicely struck. He's a powerful hitter of the ball. Yes, one of the finest outfielders we have, Jigar. He's already taken such a good catch, a splendid one. Slower through the air. The batsman beaten all ends up, and once again Amol Polke has got the bails off. Almost every delivery is getting the bails off. आठ ओवर के बाद 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर 72 गेंदों में 133 रन्स बनाने 133 runs to win off just 72 balls. The current run rate 5.75, the required run rate 11.08. उस गेंद को ज्यादा फ्लाइट कराई थी, वाइडिश मिड ऑन की तरफ ड्राइव किया मोहन ने, बड़ी आसानी से 1 रन मुकम्मल हुआ। रन संख्या बढ़कर अब 47 रनों पर। पर्पल कैप होल्डर राहुल झा गेंदबाजी करते हुए इन ऑर्बिट एंड की तरफ से स्ट्राइक पर है आशय। अच्छी गेंद, अपने सभी वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हुए राहुल झा, पर्पल कैप उनके मत्थे इस वक्त सवर कर, बिल्कुल एक अजीब और गरीब गेंद, वाइड का इशारा, 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर। $50 runs up on the board for team Super Kings. Something to cheer about. Yes, they need to play out those 20 overs. If their net run rate has to be reasonable, they need to play out those 20 overs. They cannot afford to get run out tonight. All out.
9 ओवर के बाद 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कल का मैच ठीक 6:30 बजे टॉस, टीम चार्जर्स बनाम टीम गैंगस्टर्स। टुमारो 6:30 PM sharp the toss, टीम चार्जर्स वर्सेस टीम गैंगस्टर्स। यस, असलम भाई और करण सिंह वालिया स्ट्रैटेजी बनाते हुए कल के मैच के लिए पता नहीं शायद माइंड गेम्स भी खेलते होंगे दोनों ही। स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल बनती होगी। कल का मैच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चार्जर्स बनाम गैंगस्टर्स। प्लीज नेट्स में कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा दोस्त। Nobody can play in the nets, please. Thank you. चलिए, ये चौका होगा जरूर, डॉट शॉट। अंपायर के सिग्नल की हम प्रतीक्षा करेंगे। 22 के रूप में वो डॉट शॉट चौका मिला। रन संख्या बढ़कर 55 रनों पर। बहुत ही अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज तो बीट हुए लेकिन विकेट कीपर अभी मिस कर गए। अमोल काफी अच्छे फॉर्म में है, उस गेंद को लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाया। मे बी ही वॉज अनसाइटेड। अच्छी गेंद। आशय चलिए, रनआउट के लिए रेफरल लिया है। ये तो रेफरल स्क्वायर लेग अंपायर ने लिया, अब तक गेंदबाज ने रेफरल नहीं लिया है। जेनसन एलईडी लाइट्स थ्रोइंग लाइट ऑन द डिसीजन। वेलकम टू केके सर। वार्म वेलकम टू मिस्टर किशोर पांडे। There's an appeal for run out. Just checking. चलिए, ड्रिंक्स इंटरवल। Okay, the wickets are uprooted before the batsman bat is grounded behind the popping crease. So the batsman is out. The batsman is out.
55 for 7. Vikram to Bhavnit. दस ओवर के बाद 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर. Manish, the new man in, bowling from the in-orbit end. To face him, the wicket-keeper batsman Mohan Mittal. 7 wickets down for just 55 runs. The required run rate 12.40. चलिए और एक विकेट गिरा है. Prithpal on strike.
थोड़ा सा inside out shot, couple of bounces straight to the fielder. With that couple, the score now on to 59. 59 for 8. ग्यारह ओवर के बाद 59 रन 8 विकेट के नुकसान पर 59 for 8 and Vikram to continue. The required run rate 13.33. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, धीमी रफ्तार से गेंदों को टॉसअप कराते हुए, रेवोल्यूशंस इंपार्ट करते हुए वो गेंद काफी आगे गिरी, बाहरी किनारा लेने में सफल हुए थे लेकिन बहुत ज्यादा लंबी गिरी वो गेंद। सुरक्षित प्रितपाल 59 for 8. The final ball to come in this 12th over. $59 for 8. $59 for 8 at the end of 12 overs. 48 balls and 120 runs to win the match. Required run rate exactly 15.00. हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर उदय भाई जैन का स्वागत।
Clean bowled. Jensen LED lights wicket. The last man now walking onto the wicket. Keval औपचारिकता बाकी, the writing on the wall. Yeah, in the end, this match really turning out to be a dampener. ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच टूर्नामेंट का सबसे तगड़ा मैच होगा, लेकिन इस वक्त मैच बिल्कुल एक तरफा होता हुआ एक बहुत ही बड़ी जीत दर्ज करती हुई इस वक्त टीम चैलेंजर्स। इस मैच को जीत कर टीम चैलेंजर्स पॉइंट्स टेबल पर सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर लेगी, और दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी हार के चलते हुए नेट रन रेट भी काफी नीचे जा सकता है टीम सुपर किंग्स के लिए। तो ये ध्यान देना होगा तुषार उच्चिल और उनकी थिंक टैंक ने। और 3 मैचेस खेलने बाकी है राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट में, दोनों ही टीम्स अपना चौथा मैच खेलती हुई। कल का मैच ठीक 6:30 बजे टॉस टाइम, चार्जर्स और गैंगस्टर्स। टुमारो 6:30 PM। बढ़िया टाइमिंग।
केवल एक ही रन की बढ़त, 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी इस वक्त विकेट पर। द लास्ट टू बैट्समैन। Score at the end of 14 overs, 65 for 9. Four overs, two maidens, no wickets, 7 runs given away by Vikram. So good spell from Vikram. This batsman Ayush and Pritpal Singh Baraj delaying the inevitable. Manish bowling a good spell, a good option for Vikram. थोड़ा सा पिछली खेला था लेकिन कोई खतरा नहीं, अच्छी टाइमिंग, 2 रन मिले, थोड़ा सा स्टेप आउट होकर खेल गए थे प्रितपाल। 68 for 9. One more ball to come in the 15th over. मौका बना था, बहुत ही टफ चांस था। Ball was flying off the edge. It was traveling at great speed. 72 with that dot shot boundary.
No gain, free hit. Vinit Shah. That spell of Vedanta comes to an end. 4 overs, 19 runs, 2 wickets to him. So yes, he gets to keep the purple cap. Rahul Jha with 8 wickets. He's picked up a wicket today. 8 wickets to his credit and will have that purple cap on his head. Rahul Jha.
थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए, हालांकि काफी अच्छी पेस है सेमी न्यू बॉल के साथ भी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। तो विकेट काफी परचेस मिलता हुआ, एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन उभर कर आता हुआ विक्रम पंजवानी के लिए मनीष के रूप में। डॉट शॉट चौका, प्रतीक्षा करेंगे अंपायर के डिसीजन की ऑफ द बैट। $85 for 9 after 17 overs. आयुष हर गेंद को मिडल करते हुए, timing on the rise through the line. अगर ये 20 ओवर्स ये जोड़ी खेल लेती है तो नेट रन रेट को सोचा था उतना नुकसान नहीं होगा, और केवल और 12 गेंद खेलनी है। ऑरेंज कैप शाश्वत के पास 3 इनिंग्स 217 रन्स, एवरेज 217 रनों का एवरेज शाश्वत का, केवल एक ही बार आउट हुए है, स्ट्राइक रेट 136.48। ऑरेंज कैप नंबर 2 आर्यन पटनी वॉरियर्स 3 इनिंग्स 182 रन्स, नंबर 3 पर सागर उच्चिल वॉरियर्स 157 रन्स।
Nilkhand. विक्रम पंजवानी नंबर 2 के पोजीशन पर आ चुके हैं ऑरेंज कैप होल्डिंग्स 196 रन एवरेज 65.33 स्ट्राइक रेट 143.07 थर्ड पे है आर्यन पटनी 3 इनिंग्स 182 थैंक यू जॉन्टी ये कैच था शायद बढ़िया टाइमिंग डॉट शॉट चौका क्या बात है आयुष अग्रवाल 93 फॉर 9 आखिरी 8 गेंदबाजी बाकी है इस इनिंग्स में they play out those 20 overs the net run rate will not take such a huge beating this last wicket partnership is already worth 31 runs 31 runs की अनबीटन पार्टनरशिप चलिए आखिरी 6 गेंदबाजी बाकी है yes the last wicket had fallen in the 13th over 12.4 to be precise Rahul Jha to bowl the final 6 balls can they stay unbeaten they cannot afford to get all out now after having played at least 7 overs they need to play out this final 6 balls Three balls to go. Final ball. 96 for 9.
Good rear guard action. That's a dot shot boundary in the form of buys. 100 runs, 100 runs and unbeaten. चलिए जल्द से जल्द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आइए. चलिए I'll request everybody to please come in front of the dais. चलिए I'll request team challengers सामने आइए please दोनों ही teams. Tushar with your team Super Kings, I'll request one and all to please assemble in front of the dais to do the honors. May I request Aslam Bhai, Kuldeep sir, Karan Singh Walia ji, Satish ji Agarwal, Vijay ji Jha and Uday Bhai Jain to please come up on stage. चलिए जल्द से जल्द हम will get done with this prize distribution ceremonials. चलिए सीधे सीधा Tushar Uchil, can you please come up on stage? May I also request Mickey Modi to please come up on stage. Mickey bhai. Yes, श्रद्धा गाला जी आपको भी स्टेज पे आना है. Yes, sir, we have with us Tushar Uchil, the losing team captain. Tushar, simply a bad day in office, not your day. And your net run rate has really taken a beating. So it's going to be a tough ask for you to motivate your team and reorient the team and once again come back into the reckoning. It's going to be a challenge. Well, yes, it's certainly going to be a challenge, but yeah, tough day with the bat, especially complete failure. I think credit goes to Vikram and his team. Especially Vikram was the way he batted tonight. I think it was one of his finest innings. Uh, he after the 15th over, the way he took charge and he attacked and cleared the boundaries. I think it was good to see a good challenge faced by us, especially in the bowling department. But yeah, I think complete lack of batting. But I think this is a kind of a game which
comes and goes, we just have to take it up in the chin and come back strong in the next game. Yes, sir. Thank you and wish you all the best. If any captain can do that turnaround, it will have to be you, Chills. You've got a good team. All the best. And now may I request Vikram to please come up on stage. A warm round of applause for the superstar player. What a fantastic victory this was. Built to be a fantastic match. In the end, quite a dampener. It was such a convincing victory for you, and the way you batted, one of the best innings that GSC has witnessed from your blade. Yeah, I'm extremely proud, of the way my guys have fought back after that defeat in the last game. It was a tremendous comeback, and this is what challengers are known for, to come back strong. Last match was really an off day for us, and we really were hurt with that loss. So I'm really proud of the way these guys have come back into this game and shown character. And even while batting, Vedant, we lost a few early wickets there, so my role was to bat through the innings. Even I was struggling during the mid phase of the innings. But then Jaju and me were always talking that one or two good overs and we'll be back. And that's exactly what happened. And it was a great game overall. Yes, sir. Thank you and wishing you all the very best. And we have the purple cap to be handed over, and to do the honors, may I request Satish Agarwal ji to please hand over the purple cap. And may I invite Rahul Jha to please step on to the stage to collect the purple cap. He's got 8 wickets to his credit, Rahul Jha. Round of applause for Rahul. Yes, there it goes. Rahul? Rahul, slightly surprised with the purple cap on your head? Yeah, it's a good feeling to have these individual awards, but the better feeling is that we've come here with a clinical performance and we won the match. And I think no greater feeling than that the team is doing well and I'm able to contribute in my own way. But as I said, that these things are just a incentive, but the real thing is that the team challengers are doing well and hope that continues. So very delighted with the win. Thank you and all the best. And now to do the honors of handing over the man of the match award, मैं अनुरोध करता हूँ असलम भाई से कि अपने शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का खिताब प्रदान करे विक्रम पंजवानी. There's only one contender all the way. 98 runs of 65 balls, 12 boundaries and 4 towering sixes, 4 overs, 2 maidens, 7 runs for no wickets. And yes, lots of goodies to be collected. The marathon goodie bag, body first hamper, a memento, Gajjar Group glaze, and yes, man of the match watchers from Zig Sports Studio. Vikram, I've been mentioning right from the second match that team challengers is the team to beat, and the way your team came back after that hiccup, your team is really going great guns. This is just the beginning, I feel. Yes, it is. It is just the midway, and we can't get complacent. We have 3 more matches to go in the league, and we really have to play with the same attitude if we have to go far in this tournament. Even after scoring 178, my bowlers were all charged up, and this is what I wanted from them. We didn't want to take this lineup, we didn't want to take this score very lightly because Chargers, have match winners in their game. They can take it away, so Super Kings, sorry. So it was a great performance by us. Well done, and yes, wishing you all the very best. चल इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम, आज की ये शाम यहीं पर समाप्त होती है. कल ठीक 6:30 बजे फिर से एक बार आपसे लाइव कनेक्ट करेंगे टॉस के लिए. कल का मैच चार्जर्स बनाम गैंगस्टर्स. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. गॉड ब्लेस. शबा खैर.